purport of the Bhagavad Gita. Translation: by performance of yajna, one's eatables become sanctified, and by eating sanctified foodstuffs, one's very existence becomes purified. By the purification of existence, finer tissues in the memory become sanctified. And when memory is sanctified, one can think of the path of liberation. On behalf of ISKCON's Govardhan Eco Village, I'm very honored to welcome His Divine Grace, Shri Vijendra Saraswati Ji, who has come as a guest with Shri Gajanan Dange Ji, Gajanan Dange Ji, Shrikant Bharti Ji, Rakesh Nathani Ji, and all the guests, all the delegates, speakers, and our esteemed sponsors and supporters for this event, partners of this event. It gives me great pride in welcoming all of you for the C20 vertical envisaged under the LiFE, which is the food and life. This has been the responsibility of Sri Gajanan Dange Ji, who on behalf of Yojak has been coordinating the entire LiFE vertical, and he has visited Govardhan Eco Village in the past. And then when this G20 event started rolling out, I suddenly received a call from Gajanan Ji saying that we want ISKCON to be part of G20. Honestly, I did not know what is G20 that time in terms of the actual significance. I had read about it in media and other places. And then when we started discussing in Pune, then he said that ISKCON has always been very prominent globally for two things. One is for praying, and second is for feeding. And as of today, all across the world, we have more than 750 ISKCON temples, and over the last 55 years, ISKCON has distributed more than 15 billion plates of prasadam across the whole world. Today, as part of the midday meal program, the various NGOs connected to ISKCON, they're distributing every single day 3.5 million plates daily of sanctified, nutritious food to enable the education of the children and develop the character. So, typically, when people look at spiritual organizations, your timer is not working. No, you said it. I want to see how efficient you are. No. That is my fear, because our introduction itself takes half an hour in our katha. So, typically, when I go for programs and conferences, people look at me and say that, okay, what's a spiritual person doing in this kind of a conference? Because I was giving a talk in MIT Boston, and one professor came to me after the lecture and said, hey, they introduced you that you are from IIT Bombay, but you are speaking Bhagavad Gita, which is very strange. Your dress is even more strange. Your hairstyle is totally strange. So I don't know who you are. Are you engineer, doctor? What are you? So I said, sir, I am a Vedic psychiatrist. And when people say, I don't believe in religion, I don't want to come into all this kind. I said, who says religion? Who says spirituality? We are into healthcare. And healthcare is important or not important? Very important. So today India has 70,000 hospitals and 2 million temples. And another important data is post-COVID, several businesses have closed down. Not a single temple has closed down. So interestingly, the way forward, as we see, is since time immemorial, India's Sanatan Dharma and Vedic tradition, it helped in creating mature, responsible citizens by combining three elements. First,
by making individuals of society spiritually absorbed, purpose-centric, giving them a direction. Because every journey begins with the GPS, your destination. So therefore, that is the first principle for a satisfied, peaceful, harmonious society, to be spiritually absorbed, to be purposefully absorbed, knowing which direction you want to go. Second, once a person is satisfied within, then he has to automatically become socially sensitive. So traditionally, if you see, till around 1800, when India's GDP contribution was amongst the topmost in the world, we had a society which cared for each other automatically by default. Because if you're transformed within, you would want to express compassion without. So when there is spiritual absorption is followed by social sensitivity. And then when a person is both spiritually absorbed and socially sensitive, then he becomes environmentally alert. And he has to respect the environment, because he sees that ultimately my existence is because of multiple factors put together. And therefore, here at Govardhan Eco Village, following the inspiration and the direction of the founder of ISKCON, His Divine Grace Srila Prabhupada, who in his 6th purpose of ISKCON mentioned that one of the purposes of ISKCON would be to showcase simple living and high thinking centered around cow protection and agriculture. And then following in his footsteps, His Holiness Radhanath Swami Maharaj, the founder of Govardhan Eco Village, inspired one of the first ISKCON's initiatives in rural India, in the midst of 6.5 lakh villages. ISKCON has almost 350 temples in India, but this is practically one of the first of its kind in rural India, thanks to the efforts of all the devotees and supporters. And therefore, we are very honored, Sir Gajananji, for your confidence in us. As part of the Secretariat, he has a major responsibility as a stakeholder, so that each and every conference which happens follows a certain decorum, follows a certain system, and he has been leading our entire vertical of LiFE exceedingly well. I'm grateful to Gajanan sir. I'm also grateful to Rakesh Nathani ji, who's part of the government and one of the people who knows the government's functioning so astutely. And he's like our government consultant on various things. And he's been always very supportive. And he was also like a fellow traveler when Yachnit and Sammy organized our fam trip to Israel last year, and we had an excellent time together. And Srikanji is the one who came up with the idea that ISKCON in Palghar, since they are engaged in not just spiritual activities, but also working in more than 150 villages through the Govardhan Rural Development, they should take all these initiatives of healthcare, livelihood, education, and skill development and malnutrition eradication, all of this put together under one banner of Atmanirbhar Palghar. So that was an idea given by Srikanji, and I'm very honored that today, on the occasion of this C20 conference here, we have the annual report of the last year's C20, the initiatives as part of Atmanirbhar Palghar. And on the occasion of the C20 conference, I would like to request Srikanji, Rakeshji, and Dange sir to release the annual report of Atmanirbhar Palghar. With those, I conclude my session. Thank you very much. Can we have a huge round of applause, everyone? Hare Krishna. I'm your co-host for this event. My name is Anaga Bhosle.
Thank you so much, Gaurang Prabhu, for these wonderful words. Like we said, that we are not human beings having spiritual experience, we are spiritual beings having human experience. We are all connected by one source. The motto of this G20 is Vasudevam Kutum Kutum. I would love everyone to start with this Mahamantra: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, everyone, for patiently and kindly listening to us. I'm honored to be here and co hosting this event. I would love to call Dr. Gajanan Dange, President of Yojak Center for Research, and kindly say a few words. Mr. Dange, everyone. भारत के G20 की अध्यक्षता के समय में C20 के लिए भारत की ओर से अध्यक्षता कर रही पूज्य माता अमृतानंदमयी के चरणों में सादर वंदन। आज आद्य गुरु शंकराचार्य जी की जयंती है। उसी परंपरा के अनुसरण करते हुए, अनुगाहन करते हुए आगे ले जाने वाले पूज्य विजेंद्र सरस्वती जी, इस्कॉन के द्वारा विश्व में जो फूड विषय को लेकर कार्य हो रहा है, उसी श्रृंखला में सामाजिक संस्थाओं को साथ जोड़कर G20 के एक अत्यंत महत्वपूर्ण C20 एंगेजमेंट ग्रुप के अंतर्गत लाइफ और फूड विषय का भारत का नेतृत्व करने वाले पूज्य गौरांग दास जी, मंच पर विराजमान श्रीकांत जी और महोदय, सभी यहां पर उपस्थित मान्यवर महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि भारत के लिए यह एक बहुत गौरव अनुभूति का समय है कि हम लोग जो यह विश्व का अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र समूहों का प्लेटफॉर्म है, जो विश्व की विविध नीतियों को निर्धारित करने का कार्य करता है, ऐसे G20 के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत कर रहा है। हम सब लोग यह भी जानते हैं कि इस G20 के अंतर्गत जो विभिन्न ट्रैक्स चर्चा के लिए चलाए जाते हैं, उसके अंतर्गत 2014 के पश्चात एक विशेष ट्रैक तैयार हुआ जो सामाजिक संस्था और सामाजिक समूहों का था। इसके पहले विभिन्न राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष, फाइनेंस मिनिस्टर्स, ऐसे सभी लोग चर्चाएं करते थे। मगर जब यह चर्चा आई कि ऐसी चर्चाओं में समाज के भी कुछ महत्वपूर्ण विषयों को अगुवाई करनी चाहिए और एजेंडा में उसका स्थान प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए C20 का निर्माण हुआ और C20 के अंतर्गत विभिन्न विषयों की चर्चा भारत और विश्व के सभी ऐसे सामाजिक संस्थाओं के लोग आज कर रहे हैं जो समाज के सामने मुख्य चुनौतियां हैं, उसको G20 के एजेंडा में स्थान प्राप्त होना चाहिए। और इसी कड़ी में भारत के आदरणीय पंतप्रधान महोदय ने विश्व के सम्मुख एक विचार रखा था कि वर्तमान में जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो विभिन्न समस्याएं विश्व फेस कर रहा है, उसका समाधान मात्र टेक्नोलॉजी नहीं है। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसी विषय को सभी विश्व को अपनाना होगा। और इस विषय को ध्यान में रखते हुए C20 के अंतर्गत सामाजिक संस्थाओं के द्वारा लाइफ वर्किंग ग्रुप का निर्माण हुआ है। हम लोग इस सुनहरे अवसर पर ग्रासरूट इनोवेशंस एंड लाइफस्टाइल, फूड एंड लाइफस्टाइल, फैशन एंड लाइफस्टाइल, वाटर, वेस्ट,
हैबिटाट मैनेजमेंट, ऐसे जो जीवन शैली के संबंध में जो विभिन्न विषय है उसकी चर्चा इस पूरे समय में करेंगे। आपको ये बता दूं कि इस पूरी चर्चा से हमें अपेक्षा यह है कि जून के अंत तक इस चर्चा के द्वारा एक पॉलिसी पेपर तैयार होना है। सभी वर्किंग ग्रुप अपना अपना पॉलिसी पेपर जून 30 तक तैयार करेंगे। उसके पश्चात जयपुर में सभी C20 वर्किंग ग्रुप और इस प्रकार से जो विभिन्न वर्किंग ग्रुप है, इस प्रकार के ग्रुप का एक पॉलिसी पैक तैयार होगा और सितंबर में जो दिल्ली में सारे राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होनी है, उन राष्ट्र प्रमुखों के बैठकों में इस प्रकार की विषयों के पॉलिसी पैक को प्रस्तुत किया जाएगा। तो मूलतः यह जो आज की चर्चा है, ये संपूर्ण चर्चा आप जैसे ऐसे ही विशेष लोगों को निमंत्रित किया गया है जो फूड और जीवन शैली को लेकर विभिन्न प्रकार का काम अपने अपने स्थानों में कर रहे हैं। और आपसे यह निवेदन है कि आज की चर्चा में आप अपने अनेकों वर्षों से जो अनुभवामृत आपने पास तैयार किया है, वो अनुभवामृत आप भारत के लिए C20 के पॉलिसी के पेपर के लिए आप हमको प्रदान करें। हम सब मिलकर भारत की इस प्रेसिडेंसी के समय में विश्व के सम्मुख एक बहुत सुंदर नीति पत्र, एक बहुत सुंदर घोषणा पत्र जीवन शैली के लिए प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी के सहयोग से ही ये प्राप्त होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Dange. Now, I would love to call upon Shrikant Bharatiya, Mr. Shrikant Bharatiya, member of Legislative Council. Please, everyone. आदरणीय गजानन जी, आदरणीय नाथानी जी, और जिनके डर के वजह से मैं दौड़ता भागता यहाँ आया, हमारे मित्र, मार्गदर्शक, स्नेही आदरणीय गौरांग प्रभु जी, ये भगवान कृष्ण की चैतन्यमयी भूमि में और राधानाथ स्वामी महाराज जी के पुण्य पावन पवित्र ऐसे स्पर्श से पुनित इस गोवर्धनी के विलेज में मैं आपको तहे दिल से वंदन करता हूं, आपको अभिवादन करता हूं। संचलन जब शुरू हुआ तो इसका जिक्र हुआ है कि ये भूमि आप जब यहां आए तो आपको कैसी लगी। मैं मराठी हूं, वैष्णव हूं, वारकरी हूं। हमारे घर में चौथी पीढ़ी पंढरपुर की वारी है। तो जब कभी मैं पहली बार GAV में आया तो मुझे संत तुकाराम महाराज जी का वो अभंग याद आया, वृक्षवल्ली आम्हा सोये रे वनचरे, पक्षी ही सुस्वरे आळविती। और संत तुकाराम महाराज जी ने अभंग के आखिरी में ऐसा कहा है कि येणे सुखे रुचे एकांताचा वास, नाही गुणदोष अंगा येत, तुका म्हणे होय मनाशी संवाद। जिसका जिक्र श्रद्धेय गौरांग प्रभु जी ने किया कि इस्कॉन क्या करता है, तो एक थेरेपी दे रहा है समाज के लिए, और जिसके अंदर में आदमी मन से बात करता है। और GAV में ये सुमिट होना, ये एकत्रीकरण होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गजानन जी ने सच में सारा विषय आप सबके सामने रखा है, लेकिन गजानन जी, मैं जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के कुछ एक्टिविस्ट दिल्ली गए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी एक मीटिंग ली थी और उन्होंने ऐसा कहा था उस वक्त कि G20 के माध्यम से विश्व के बड़े देशों के लोग यहाँ पैसों का व्यवहार करने आएंगे, व्यवसाय करने की बात करेंगे।
लेकिन फिर ये C20 क्या है, ये Y20 क्या है, ये W20 क्या है, इससे ज्यादा ये क्यों है, वजह क्या है? तो विश्व के और देश के अंदर में यदि कोई व्यवसाय हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, उसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के माटी के अंदर में यदि हजारों साल की संस्कृति, विरासत, जो मिट्टी की खुशबू है, ये भारत के अंदर में यदि कोई व्यवसाय भी करता है, उसकी बात भी करता है, तो ये भारत के मिट्टी के खुशबू की हर चीज का दर्शन, इसका प्रकटीकरण, इसका मंथन होने की आवश्यकता है, इसलिए सारे वर्टिकल्स हैं। गौरांग प्रभु जी को मालूम है, मेरी बेटी ऊर्जा महाराष्ट्र की Y20 की कोऑर्डिनेटर है। वो परसों के दिन मुझे कह रही थी कि हम पूरे महाराष्ट्र में छोटे छोटे गांव में जाकर यंगस्टर को लेकर चौपाल कर रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा कि क्या G20 का विषय है और तुम क्या गांव में चौपाल कर रही हो? तो मुझे उसने कहा कि भारत के समाज जीवन के अंदर में जो डेमोक्रेसी है, वो हमारा डीएनए है, उसका चिंतन होना चाहिए, नए पीढ़ी के अंदर में इसकी बात होनी चाहिए, और इसलिए Y20 है। और आज हम C20 के तहत यहां 2 दिन का एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, और हमारी ये परंपरा रही है, हमारा इतिहास रहा है, जब भारत के अंदर में 4 लोग इकट्ठा आते हैं और सही चिंतन करते हैं, तो केवल 5 साल के नहीं, 100 साल की दिशा उस चिंतन के माध्यम से मिलती है। और ये तो भूमि सृजन की भूमि है, ये तो चिंतन की भूमि है, जहां हम सब लोग 2 दिन अभी बैठने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि नहीं, लेकिन गौरांग प्रभु जी का भाषण, मार्गदर्शन, चिंतन, ये मुझे बहुत कम समझता है, लेकिन उन्होंने बनाई हुई खिचड़ी में कभी छोड़ता नहीं। तो उनके कई बड़े बड़े वीडियोज और यूट्यूब के ऊपर में देखेंगे कि बंदा भगवा पहन के है और खिचड़ी बना रहा है और दुनिया को खिला रहा है। तो हम यहाँ फूड20 की भी बात होने वाली है। तो इस विषय को लेकर एक प्रतीत यशस्वी, और जिसको हम 24 कैरेट ऑथराइज, ऐसी जगह हम सब ये 2 दिन का चिंतन करने जा रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये 2 दिन के अंदर का चिंतन न केवल 10 साल, हजारों साल भारत के जीवन दर्शन के अंदर में एक मार्गदर्शक सिद्ध होगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि मैं लिटरली दौड़ते भागते डर के मारे यहाँ पे आया हूं, और मैं गौरव प्रभु जी से बहुत विनम्रता से उनको धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने यहाँ आने का मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर श्रीकांत जी, थैंक यू कि आप डर के यहाँ पे आए ताकि हम इतने अच्छे खूबसूरत शब्द सुन पाए। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर राकेश नैथानी जी को, स्पेशल सेक्रेटरी टू स्पीकर महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लीज एवरीवन। प्रणाम प्रभु जी, नमस्कार श्रीकांत सर, नमस्कार गजानन सर। और जैसे श्रीकांत सर ने कहा कि प्रभु जी के डर के कारण से उनको भागकर सुबह आना पड़ा, मैं भी शाम को करीब पालघर पहुंचने वाला ही था, तो प्रभु जी का यशनीत को फोन आया कि नैथानी जी को बोलो कि वो कुछ भाषण दें, और विषय भी मुझे नहीं पता था क्या दें, और कहा कि उनकी एनओसी ले लो। तो मैंने कहा प्रभु जी ने कहा तो विषय जानने की जरूरत नहीं है, एनओसी की प्रभु जी कहें और उसको मैं मना कर सकूं, तो वो डर के मारे मैं जो है भाषण देने के लिए तैयार हुआ। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने किसी से पूछा कि C20 का फुल फॉर्म क्या है भैया, एक किसी मंग से ही पूछा मैंने, उसने कहा भाई मुझे भी नहीं पता, मैंने गूगल करके देखा था, उसमें रियलमी है मोबाइल का कोई मॉडल आया था। तो यार मैंने कहा प्रभु जी, और मैंने कहा फिर प्रभु जी रात को प्रभु जी 11 बजे भोजन पे मिले, तो मैंने कहा प्रभु जी बोलना किस विषय पे है? कहते यार फूड और लाइफ पे बोलना है। तो सर मैं थोड़ा बहुत जो है, वैसे तो मैं कागज लेके नहीं चलता, लेकिन इस विषय थोड़ा मुश्किल है तो कागज लेकर आया। अच्छा
Ladies and gentlemen, it is an honor for me to stand before you and to speak on this subject, food and life. And as an amateur, which I've already told to you, I've just tried to make a synthesis of the issues that struck to me this morning so that I could bring to you, and they could be used as an agenda or as a discussion points for the discussions that we are going to have for the next 2 days. सर, जैसे प्रभु जी से कल बात हो रही थी, हम कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। तामसिक भोजन करते हैं तो तामसिक विचार बनते हैं। और हमारी भारतीय पद्धति इस हद तक जाती है कि भोजन बनाने वाला किस मनोदशा के दौरान भोजन बना रहा है, उससे भोजन की क्वालिटी जो है अफेक्ट करती है। अगर मैं गुस्से में मेरी धर्मपत्नी भोजन बना रही है तो निश्चित है कि उस दिन मेरा झगड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भोजन बनाने वाले की मनोदशा के ऊपर भी हम भारतीय लोगों ने चिंतन किया है। और भोजन हमारे लिए, फूड फॉर अस इज मच मोर देन मियर सस्टेनेंस। हमारे यहाँ हर जो भी हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, बैसाखी होती है तो बैसाखी के पहले हम जो है फसल काटते हैं, फसल काटने के साथ जो है हमारा एक फेस्टिवल जुड़ा हुआ है। तो हमारे हर हार्वेस्टिंग सीजन के साथ एक त्योहार जुड़ा है। उस त्योहार के साथ हमारे अलग अलग तरह के व्यंजन और डिफरेंट काइंड ऑफ रेसिपीज जो कि हमारी दादी माँ के टाइम से बना करती थी, वो रेसिपीज को बांटना, उनका खाना, तो हमारे कल्चर के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर खाने का एक अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। और हम हमारे देश में एक चीज ये देखने लायक है, हमारे जितने एवरी स्टेट इन इंडिया हैज ए डिफरेंट cuisine. Our friend Sita is there. Sita, I'd like to speak in English also. But every state in India, as you are aware, has a different cuisine. And every state has a different kind of a festival. The name could be different, but for every harvesting season, we have a festival in India where we try to integrate harvesting with our food habits also. So the question, as Gajanan sir was saying, that we need to develop a sustainable model to grow food for a country like India. Last week, we had a big headline saying India is the most populous country on this planet. The fact is that India as a country is a self-sufficient country. We are the largest producer of milk in the world, largest producer of pulses, one of the second largest producers of wheat, rice, sugarcane. But we need to think for a process as to how we can make our food sustainable in the sense that we leave our ecosystem or biodiversity intact for the future generations. We don't exploit our nature to an extent that we hear that if in case the temperatures go up by 1.5 degrees centigrade, the changes are going to be irreversible, and the maximum damage on earth, if it is going to happen, it is going to be in India. So for us, it is a question as to how we need to change our food patterns, go back to our tradition. Recently, I think under the guidance of the Honorable Prime Minister, we had the United Nations declaring 2023 as the year of millets. So we are seeing a millet revolution in India, and it is proven that millets are our traditional crops. They have been growing since ages together. They have adapted to our climate. They are resistant to diseases, resistant to pests also, and the nutritional value of millets is much more than the traditional wheat and rice that which we have been eating. So this 2-day conference can also think upon whether we need to change and to shift from wheat and rice, what we call as gluten-based food, to millets. And can millets be a panacea for feeding a country like India, where we have large areas which have water scarce areas? So in water scarce areas, millets is one of the crop which could be grown. Another thought process with Srikanth sir, which I would like to share, is that I went to Jalgaon and met the owners of Jain Irrigation, and they said that if India wants to be the next superpower, the only challenge before India is going to be water, and how to conserve our water. And he gave me an idea. He said that the kind of irrigation planning that we are having in India, specifically even in states like Maharashtra, where we are trying to bring in water from areas which are surplus in water to areas which are drought prone, is not right. We need to grow crops which need water in water prone areas where water is sufficient, and we need to grow crops in drought areas, and we don't need to spend this humongous amount of money shifting water from one place to another. This is one thought I think this 2-day conference can also think about, and whether this is a tangible solution. Maharashtra as a state has been spending humongous amount of money on irrigation projects. So this is something which I think we need to think about. Another thing which I would like to also point out to you is that we go abroad. I was in US, I was in Toronto some time back, and I could see the huge quantity of food that the Western world wastes. In India, we said हम लोग zero wastage खाने का करते हैं. हम लोग जब छोटे थे
तो चाहे गरीबी का कारण हो, जो रात को जो रोटी बच जाया करती थी उसको सुबह चाय में नाश्ते में खा लेते थे। गुजरात में लोग उस रोटी को वो सेक के खाकड़ा बना लेते हैं। तो भारत से एक विश्व को एक सीखने की एक जरूरत भी है कि भारत के अंदर, हमारे घर के अंदर माँ बचपन से हम लोगों को बार बार बोल के कहती है कि खाने का एक दाना भी आपको वेस्ट नहीं करना, जो कि हम बाकी देशों में देखते हैं कि खाने की जो है बेहिसाब जो वेस्टेज होती है। बाहर देखोगे तो जितना आदमी खाता नहीं उससे ज्यादा जो है वो कूड़ेदान में डाल देता है। तो ये हम विश्व को बताना चाहेंगे कि जीरो वेस्टेज ऑफ फूड किस तरह से भारत में करते हैं। कुछ लोग बताएंगे जापान में भी इस तरीके चलता है। एक चीज और मैं ये देखना चाहूंगा, मैं कनाडा गया था तो वहां का मुझे ओटावा के पास एक फार्म में हमें लेके गए थे। द फार्म वाज कॉल्ड मैरीपोजा फार्म। इट वाज ह्यूज फार्म एंड दे यूज्ड टू ब्रिंग कैनेडियन चिल्ड्रन टू दैट फार्म एंड दे यूज्ड टू गिव अ पैच ऑफ लैंड टू ईच चाइल्ड एंड द चाइल्ड यूज्ड टू ग्रो रेडिश, कैरेट, व्हाटएवर वेजिटेबल्स they said that our children have forgotten how to grow food. So we tell the children that this is your patch of land, radish grows underground, सी प्याज ऐसे उगता है, आलू ऐसे उगता है। तो आप खुद आके देखें तो हमें अपने बच्चों को कैसे खेती करनी है, कैसे नहीं करनी। जो हम खेती करना छोड़ रहे हैं, चाहे हम शौकिया रूप में करें, चाहे अर्बन फार्मिंग करें, लेकिन थोड़ा बहुत खुरपी हिलाना, थोड़ा ये करना, ये भारत के अंदर तो होता ही है। हम चाहेंगे पूरी दुनिया के अंदर भी इसको सीखे। भारत के शायद किसी बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता कि मूली कहाँ होती है, लेकिन कनाडा में मैंने देखा कि उसको बताना पड़ा कि मूली जमीन के अंदर होती है। और इसको देखने के लिए तू क्या कर, मूली के बीज लगा और कुछ दिनों के बाद आयो उखाड़ के देखियो मूली जमीन से निकली कि नहीं निकली। तो वो जो है वो हम लोग जो है एक जो हमारी जो अवेयरनेस है और बच्चों को हमें सिखाना कि भाई जो है किस तरीके से जो है हम अपना जो है खाना हमारा पैदा होता है उसको देख सकते हैं। तीसरी चीज मुझे प्रभु जी से एक सीखने की बात यह भी है कि हमारा भोजन कहाँ से आया और कैसा बना। अभी यचनीत हरिबोल के बारे में बता रहे थे। हरिबोल एक समय ऐसा संघर्ष कर रहा था कि इनके पास ऑर्डर्स की कमी थी। आज इनके पास इतने ऑर्डर्स आ गए लेकिन इनको जो है घी की आपूर्ति ये नहीं कर पा रहे। भारत विश्व का सबसे बड़ा नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, बट स्टिल बिकॉज दे वांट अहिंसा मिल्क, दे वांट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ A2 मिल्क एंड दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी स्टैंडर्ड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज टू कहाँ से हमारा खाना आ रहा है, हु इज प्रोड्यूसिंग इट। ये एक जो है कौन से सीखने वाली बात है। टुडे आई एम टोल्ड बाय यजनी दैट दे आर रिजेक्टिंग ऑर्डर्स, दे आर रिफ्यूजिंग ऑर्डर्स बिकॉज दे हैव सप्लाई constraints. So that it is an ironical situation. I think 6 months back they were trying to float, somehow get the orders. Now they have more orders because they are not getting that quantity of ahimsa milk. तो कहाँ से खाना आता है, क्या आता है, ये हमें सीखना पड़ेगा। लोकल जो किसान हमारे बिना पेस्टिसाइड के, बिना उसके खाना बना रहे हैं, उनको हमें ज्यादा दाम भी देने पड़ेंगे। पंजाब से साहब एक ट्रेन चलती है, दैट इज कॉल्ड द कैंसर ट्रेन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बठिंडा, गोज टू बीकानेर। 70% ऑफ द पेशेंट्स इन ट्रेन आर द कैंसर पेशेंट्स एंड दे से द मेन रीजन ऑफ कैंसर इज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब। तो पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना, फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना, लेकिन प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज ना करना, शायद मिलेट्स उसका एक सोल्यूशन हो सकता है। ये भी एक मंथन का विषय रहने वाला है। डाइट का कैंसर से क्या लिंक है, ये एक बहुत, आज एक किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, एक आदमी जो रोज मीट का सेवन करता है, पर्सन हु इज कंज्यूमिंग मीट एवरी डे, इफ यू डू हिज कोलोनोस्कोपी इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। हिज लार्ज इंटेस्टाइन इज गोइंग टू हैव स्मॉल कॉन्व्यूट्स, एक उसमें गांठें बनी होगी। और उसका कोलोनोस्कोपी करना एक वेजिटेरियन आदमी कोलोनोस्कोपी करने के मुकाबले बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो द फूड वी ईट हैज इम्पैक्ट ऑन आवर इनर मॉर्फोलॉजी ऑल्सो। यू कैन प्रूव, यू कैन सी, यू कैन हैव केस स्टडीज ऑफ colonoscopy reports of a non-vegetarian patient and a vegetarian patient. You can distinctly see the difference. तो ये जो हमारी खाने से हमारे अंदर के अंतर्मन में तो असर पड़ता ही पड़ता है, अंदर की मॉर्फोलॉजी पे भी क्या असर पड़ता है, इसके ऊपर भी हम लोग जो है कुछ उसमें कर पाए। ये जरूर है कि जो लोग बिना पेस्टिसाइड के, बिना ऑर्गेनिक खेती के कोई खाने की पैदावार करते हैं तो उसके दाम थोड़े ज्यादा होंगे ही होंगे। तो क्या हम जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लोकल किसान जो कि बिना पेस्टिसाइड, बिना उसके जो है भोजन ये पैदा करते हैं, उनको ज्यादा दाम के ऊपर जो है हम उनको वो कर पाएंगे। इस्कॉन का एक बहुत बड़ा मूवमेंट है जिसमें कि कहते हैं कि सब लोग वेजिटेरियन हो जाएं। ये मानने की बात है, दिस इज नोन टू एवरीबॉडी दैट वेजिटेरियन डाइट्स is more leaves less carbon footprint compared to meat based diet. So ISKCON is in the forefront trying to convert people into vegetarianism. So India can give to the world the importance of vegetarianism, not just as a religious dogma but for the health also. एक पालघर में हमने अपना डिस्क्रिप्शनरी फंड से भी सपोर्ट किया और वैसे किया। प्रभु जी का मैं ध्यान इसमें दिखाना चाहूंगा, प्लास्टिक फ्री पालघर। ये भी एक हम हम क्या, छोटे छोटे आप जाएंगे तो छोटे छोटे कप में हमें चाय मिलती है, छोटे छोटे कप के अंदर चाय मिलती है। वी गेट टी इन स्मॉल प्लास्टिक बैग्स एंड देन वी थ्रो दिस प्लास्टिक बैग्स ऑल अराउंड।
So how to promote single-use plastic, and of course single-use plastic going back to our fields and then having an impact there also. It is something that we need to learn from Govardhan Eco Village. Their mission for plastic-free Palghar needs to be sustained, needs to be encouraged by all of us. In case, and we can, if Prabhuji, in days to come, if we can have a what you call some neutral assessment agency which could come and then assess Palghar and see the kind of impact Govardhan Eco Village has made in Palghar prior to their intervention and post their intervention. And Shrikant sir, if this could be cited as a case study of following the Govardhan Eco model of plastic-free Palghar to be scaled up throughout Maharashtra and throughout country. में उत्तराखंड का रहने वाला हूं. उत्तराखंड जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से आप चारधाम यात्रा के निकलेंगे, दोनों तरफ आप प्लास्टिक के ढेर पाएंगे. तो जीवी इस काम को कर रहा है. हमें प्लास्टिक पालघर के लिए जो है तो सहयोग भी करना चाहिए और इनसे इस चीज को सीखना भी चाहिए. हमने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर, दूसरा क्रॉप डाइवर्सिटी के ऊपर जो है आप लोग चिंतन करेंगे. हम लोग सिंगल यूज क्रॉप करते हैं, गेहूं लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, लेकिन ये तो हमें पता है क्रॉप्स की डाइवर्सिटी करेंगे तो सॉइल हेल्थ हमारी कंजर्व रहेगी. सदगुरु ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चलाया था कि अपनी टॉप सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकें. ये टॉप सॉइल को हम कैसे कंजर्व करें, इसके ऊपर भी हम लोग अगर चिंतन करेंगे तो जो बड़ा अच्छा एक उसमें निष्कर्ष निकल पाएगा. फाइनली मैं अपने आप सब लोग यहाँ पे आए, विश्व के C20 देशों के लोग यहाँ पे आएंगे. भारत के अंदर फूड इज ए वे फॉर अस इन इंडिया टू कनेक्ट. इफ यू हैव, Shrikant ji invited me for dinner to his house. Shreya madam was also there. And incidentally, about Shreya madam, though the subject does not belong to this, she has been doing excellent work in supporting girl children. And sometimes we can have a small talk with her also on a different session. But it is, and the kind of work she does is inspiring. हम खाना एक अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करने का एक माध्यम बनता है. भोजन पे लोगों को बुलाते हैं. जिस तरह से हम मेहमान की खातिरदारी भारत में करते हैं, शायद दुनिया में ऐसा कोई नहीं करता. वो तो कहते हैं माइक्रोवेव में जा और खाना गर्म करके खा ले. हम लोग जो 50 तरह की चीजें और 5-5 बार जाके पूछते हैं, तो ये भी शायद भारत को देखने लायक चीज है. हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी इज द रेसिपी आवर ग्रैंड मदर्स यूज्ड टू टेल कि हाउ द रेसिपीज आर इवॉल्व. हम जो रुमाली रोटी कैसे बनते हैं सर, इन वंस आई वाज सीइंग ए फॉरेन फेस्टिवल जिसमें क्या इंडियन कुक वाज शोइंग हाउ टू मेक रुमाली चपातीज टू फॉरेनर्स. तो बार बार रोटी बना के ऐसे ऐसे उछालता था, तो उसने उछाला तो रोटी नीचे नहीं आई, वो क्रिसमस ट्री जैसे के अंदर का रोटी ऊपर चिपक गई थी. तो मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो रुमाली रोटी बनाने का जो स्किल है, शायद दुनिया में कोई नहीं बना पाता. तंदूर के अंदर जो खाना बना पाता वो कोई नहीं बना पाता. हैदराबादी बिरयानी को दम लगाने का जो आर्ट है वो भारत में कहीं दुनिया के अंदर नहीं है. तो जो हम भोजन की विविधता और भोजन पकाने की जो हमारी टेक्निक है, शैली है, शायद वो इंडियन कुक्स तो आजकल हमारे टेहरी गढ़वाल से बच्चे जो है पूरी दुनिया के अंदर कुकिंग का काम करते हैं, वो जो है सीखने के लिए जाते हैं. वो भी एक भारत की तरफ से सीखने लायक कि हम लोगों की तरफ से एक विश्व को एक देन हो सकती है. किस तरीके से हम जो है क्या बोलते हैं, खाने को अपने नरिशमेंट का माध्यम बनाएं और उस नरिशमेंट के माध्यम के अंदर में इक्विटेबल सस्टेनेबल वर्ल्ड कंटिन्यू करें और इस्कॉन की लीडरशिप में करें. प्रभु जी ने खुद कहा कि अगर खुद का परिचय उनको देना पड़े तो आधा घंटा लगेगा. तो ऐसे व्यक्ति जिसके परिचय देने में आधा घंटा लगेगा, ऐसे व्यक्ति जो कि निस्वार्थ भाव से किसी भी कंपनी के अंदर CEO हो सकता था, किसी भी कंपनी के अंदर बड़े पद के ऊपर जा सकता था, सांसारिक सुखों के अंदर रह सकता था, चटाई में सोता है और हम लोगों को एक प्रेरित करता है कि हमें जो है ना अपने से आगे सोचना चाहिए. श्रीकांत सर ने भी जैसे उनके बारे में कहा, तो मैं चाहूंगा इनकी लीडरशिप के अंदर अगर हम लोग कुछ मंथन कर कुछ निकाल पाए तो बहुत अच्छा लगेगा. भारत ने एक बताना चाहूंगा 260 तरह की नई किस्में पैदा करी हैं, जिसमें कि मिलेट्स की वैरायटीज भी हैं, सावन साहब बता पाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा ड्रग रेजिस्टेंट भी है, ये सब भी है. वी हैव मेनी क्रॉप्स इन इंडिया व्हिच वी कैन गिव टू द वर्ल्ड बिसाइड मिलेट्स. दुनिया से हमने गेहूं चावल उगाना तो सीखा, बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया को हम सिखा सकते हैं. और बहुत बहुत धन्यवाद. आपसे सबके सुन के बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सर. Thank you so much. Wow, that was such an insightful segment. So many takeaways. एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे dignitaries के लिए. We started off with Prabhuji talking about ISKCON being very famous for praying and feeding, and we are all grateful that today we are here at GV that is known for providing enriching food for enriched lives. And now I request Prabhuji to kindly felicitate our dignitaries one by one. I first request you to kindly felicitate Swami Vijendra Saraswati ji. Thank you so much, Swami ji. म्यूजिक बजाना बोलो ना, म्यूजिक बजाना. Thank you so much, Swamiji.
And I now request Prabhuji to kindly present a token of appreciation to Bharatiya ji. भारती जी, आपने बहुत प्यारे तरीके से बोला कि हमारा सौभाग्य है कि हम भारत भूमि पे पैदा हुए हैं, और ये हमारा और भी बड़ा सौभाग्य है कि हम आज यहाँ पर जीवन में इस चिंतन भूमि में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं हमारे C20 समिट के लिए. थैंक यू सो मच Bharati ji. I now request Prabhuji to kindly present a token of appreciation to Nethani ji. Thank you so much, Nethani ji, for shedding light on the various opportunities that India has, the various areas that we need to focus on, and also talking in detail about the brilliant initiatives the country is taking. Thank you so very much. And I now request Prabhuji to kindly present a token of appreciation to Dr. Dange. Thank you so much, Dr. Dange. और हमें पूरा यकीन है आज के हमारे इस discussions के साथ और उसके support से हम बहुत ही अच्छा C20 policy paper present करेंगे पूरे दुनिया को. With all the brainstorming sessions that we'll have throughout the day, we're sure that we're going to present a brilliant C20 paper to the world. Thank you so much once again to our dignitaries for such a wonderful start to the conference. Yes, thank you so much. Thank you. And now, ladies and gentlemen, after that wonderful start to our day, it is now time for a panel discussion on food and life globally by our Council Generals. It is my honor to welcome on stage from Israel, we have Sami Yahya, Director of Israel Tourism, and Dahila Newman, Consul General of Israel. From the USA, we have Sita Reiter. She is a public diplomacy officer at the US Department of State. She currently serves as a deputy cultural attaché in Mumbai. And from Sri Lanka, we have Dr. Valsan Bethodi, Consulate General of Sri Lanka. Yes. Let's welcome our Council Generals with a thunderous round of applause, everyone. Thank you. I now request Mr. Sami Yahya, Director of Israel Tourism, to kindly take the podium. Hello, good morning, namaskar. I just had a long trip from Mumbai. I didn't sleep yesterday. My mom came and visited the lovely country, India. And by the way, my friend Yachni, you know that you wanted to extend the stay, but my father said, no, come back now. She was 25 days here, and we do around India from Amritsar to Kerala for this wonderful and beautiful countries, the welcoming, the food. And if we're talking about food and connecting people, this is the most important. I think today is the more important segment of tourism is food, because people traveling, they're seeing, they can Google and see, but to feel, to understand, to have the feel deeping of the culture is the food, the way they cook, the traditional, the music when they cook, the dance when they cook. So it's beautiful things that connecting people more than soul to soul. So I am very happy to be here today. Even it's a surprise for me. I didn't know that I'm going to stand. And thank you for coming. Thank you. Thank you so much, Mr. Yahya. You did really well for us. Pleasant surprise. Thank you so much for addressing us. I now request Ms. Dahila Newman, Consul General of Israel, to kindly say a few words. Thank you. Do you have a hand? Yeah. Thank you. Yeah. Good morning, everyone. Before I get fired, I'm not Consul General, I'm Deputy.
No problem. No problem. I was just making a joke. I am deputy, but anyway, good morning. I'm so happy to see everyone here. Thank you so much for inviting me to this beautiful place. And I'll just say a few words from, I would say, from Israel. So, and I'm going to start with something which is a little spiritual. I feel it's the right this. So you might know that Israel is a Jewish country. We have other religions, but it's mostly a Jewish state. Jewish people have a special rules about what they can and cannot eat. And there is a famous spiritual leader and also a professor at the university who recently said the rules of what we can and cannot eat were made some hundreds years back, and they had their justification then, and we still follow them. But some things now are worth considering. And how come that we can eat things, we can eat meat, for example, which traveled across the ocean, these animals in unhumanitarian conditions, terrible, terrible conditions, and now we can eat them? He said, I think we should reconsider. I think we should put the moral values of our religion into the modern, I would say, conflicts or issues of today. So that's an open discussion going on in Israel now. Moving from spiritual to technology, I would say there are maybe two things that Israel has an advantage to give to the world alongside other countries, but Israel is leading them. One is food waste, which was already mentioned here, which is a huge problem in many perspectives, from, of course, the injustice that it creates. People are hungry on the one hand, and there's food going to waste on the other hand. That's inconceivable. And also in terms of the energy which was used to create this food is now going to waste. And this involves also carbon usage and other things that we really want to avoid or diminish or make less and less. So there are some interesting ways to measure food waste, and I'm happy to make connections if necessary. But as a pointer, food waste is something that my country is trying to work on. And the second thing I'm going to talk about is alternative protein. Some things are going on in Israel, as I'm sure in other places, which are like sci-fi. There are food tech startups working on creating. So India is a vegetarian country. But you are, of course, aware that most of the world is consuming meat more and more. And this creates many problems. I'm sure you know by now that the meat industry is polluting, I'm missing the words here, but is polluting the gases which we want to avoid more than the transportation industry. So I'm sure you're all aware of that, but that's a little bit mind-blowing. So it's worse than planes and cars and, ships. It's worse. And there are beautiful things being done in my country on that, using amazing technologies, and the end product is either, I hope I'm not offending your feeling, but when I'm talking about meat, eating meat, is that okay? But you can have a meat dish which is not really
it's either made of vegan origin or it was created in a lab without all the problems which the real growing of animals creates. So some things are going on. I'm not gonna get into all the details because I don't want to take all the time, but just say that this is pretty exciting. It also brings a very interesting financial opportunity for investments because this is a growing market. Even here in India, you can see if we move from alternative meat to alternative milk, you can see that was once just in the corner for very specific people who wanted almond milk or some other kinds of milk. Now it's getting more and more. Even at your office, maybe you would have alternative milk in your fridge now. So same will be for meat. As milk is growing, meat will also grow. You know that more and more people are becoming flexitarian, which means that they do eat meat, but they try to eat less and less for all the good reasons, and they need other things. So it's a financial opportunity. It's definitely a sustainable need. And if anyone wants more information individually, I'm happy to share. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Daya, for sharing the insights and talking about the culture, this food culture in Israel specifically. And it is so good to know that the values and the principles that we follow and you all follow are pretty similar. And yes, you said that you did ask our permission before talking about meat, but like you said, there are so many meat alternatives like monk meat also. Monk meat rather is very famous in India where people are consuming plant-based monk meat, and which, like you said, is very high in protein, it's healthy, and at the same time, we are taking care of our loving animals. Thank you so much for talking on those brilliant points. And on that note, I would now like to welcome Ms. Sita Reiter, Public Diplomacy Officer at the U.S. Government of State. She is the Deputy Cultural Attaché in Mumbai. Yes, over to you. Thank you. Can you hear me? Oh, one second. Or should I speak here instead? Yeah, it's on. Okay. Thank you, everyone. It's an honor to be here today. I hope to be joined by my colleagues from who handle the climate portfolio as well as the agriculture portfolios, but unfortunately they weren't able to join today. So I'll take diligent notes and hopefully report back to them some of the good ideas that come out of the conference today. So I actually learned about the eco-village through work with Yachnit and Mr. Naitani to help support the education for girls from Maharashtra to study in the US. And then I next learned about some of the work going on at the eco-village for climate change mitigation. I was at a conference where I heard about the multiple ways that this village is addressing all of the sustainable development goals in a small way that have potential application at scale. I've met with people throughout Mumbai who, when talked about how to solve some of the water and irrigation problems, cite small technological advances taking place here as being the best solutions to implement at scale throughout the state and even the country. And I've heard similar solutions in terms of waste management that are taking place here. So I'm really excited to join you all today and to see how perhaps this model of fruitful discussions about new technologies and smart solutions can potentially start in this community and potentially be expanded at scale. And the other thing I just wanted to mention kind of briefly is that I learned that just yesterday, sort of President Biden announced a new executive order sort of guarantee for environmental justice, to guarantee the access to clean water and food as actual a right. And the poor in the United States are disproportionately affected
by sort of pesticides and chemicals in sort of the food and in our ecosystem and in the environment. So I think it's an interesting time and hopefully a major shift in the way we think about and addressed as legislators and communities, our way of thinking about these things to make sure that these are guaranteed as rights. So yeah, again, I'm not an agriculture specialist, but generally and very broadly, the work that we do at the consulate is in climate, is working to sort of advance the US-India strategic clean energy partnership and working with India so that both our countries can meet our climate mitigation goals, our COP27 goals. So thank you again for having me, and I look forward to hearing the good ideas that all of you are bringing to the table today. Thank you so much, Mr. Writer, and we are absolutely thrilled to have you here amidst us. Thank you for joining us, and we're looking forward to many insightful discussions. And now I request Dr. Vatsan Wethodi, Consulate General of Sri Lanka, to kindly address the gathering. You want a podium? No. Okay. Anyway, let me first of all thank ISKCON for giving me this opportunity. Thank you very much. But I should say one thing. Once I stand here, I feel like as if I'm taking call to Newcastle because I see a lot of experts and I'm not an expert in this area. Right? Generally, when it comes to the Sri Lankan food, there is a general feeling that Sri Lankan food is very, very, very hot and spicy. And some people even say that that was one of the reasons in Ramayana, Ravana was hot-headed. Right? But I should say that at the same time, I should say that even in Ramayana, we have a lot of level-headed people like Mandodari, Vibhishana, or Vibhishana's daughter, right? Even Ravana himself, when it comes to his, the panditry on Shastras and Vedas, right? And also Shiva devotee, to some extent, even he also has been very, very, very level-headed. But when it comes to the food, I don't want to talk much on, the Sri Lankan food because the culture, the values, related to our food and your food is more or less the same. And especially when it comes to the Kerala state, right? Our food and the food in Kerala is, I should say that 99.9% exactly the same. It is basically rice and coconut based, even the sweets, right? Mostly jaggery based. But more than anything else, I thought, since we have a lot of experts here, I thought of just reminding one area, the food and life, right? This is not the first conference which has been happening in the world. I know that during my young age, right, whatever my mother used to give us, we, without thinking, without reading the labels, without reading anything, we just eat, whatever we get it. We never thought about the potassium contents. We never thought about the sodium contents. We never thought about, how the sugar level, right, how protein, cholesterol, nothing. We just ate it. And one more thing I would like to tell you, that if you look at this topic, universities after universities, countries after countries have been spending billions and billions and billions of dollars on doing research after research to decide what to eat and what not to eat. And still, we don't know what to eat and what not to eat, right? On the other hand, you look at a dog, you just give him, some small piece of food. One sniff is enough. He will decide whether to eat or not. So I hope these sort of conferences one day might take us to that stage without looking at the labels, without sniffing, without getting too many comments from too many people, right? We spontaneously accept our food and we eat without any fear. And in spite of all these researchers, I should say that especially, most of the nations, 70 to 80% of the people are on prescription drugs, right? All food-related diseases, right? So I hope these sort of conferences will give us, some sort of a, common program, and at least, not my generation, at least the next generation will be able to, will be able to eat their food
without any fear and apprehension. Thank you very much once again for giving us this opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Walson. Next, I want to talk about VRL. VRL is one of the forerunners in the Indian passenger travel industry amongst the private sector players. They are the title sponsors of our conference. We are very happy to welcome our representatives from VRL. Please, I would love to call upon stage Anirudh, Co-Secretary, Suresh Anahajula, VP Mumbai Operations, Sanjay Kulkarni, Media Head Mumbai, Ashwin Pai, Media Person Mumbai, and Sunil Nalwari. Please, could you please join us on the stage? And everyone, please have a round of applause for them. So I would request our VRL team to felicitate our Council Generals. Please come on one stage. Yes. I see that in one meetings, I was first speaker. Now I just I don't know where Thank you. Thank you. Thank you. Please, everyone, we can have a round of applause. I know it's not lunchtime yet, but thank you, VRL team. We are honored that for you all to be our sponsors. Next, I would love to talk about Siddharth Rath. Mr. Siddharth Rath first is MD and CEO of SBM Bank India Limited since 4 years. Previous to this, he has worked with Axis Bank for over 17 years in multiple roles. Please have a round of applause for Mr. Siddharth Rath. Kindly please take the podium, sir, and say a few words. Hare Krishna. For me, it is an absolute pleasure to be in the company of such eminent dignitaries who are here today and exchange ideas on this C20
platform that we are doing under the overall G20, which is under the presidency of India this year. As you are aware, I represent SBM Bank. SBM Bank is a young bank. The bank is just completed 4 years of its journey. And we have been very impressed with what Govardhan Eco Village has been doing here and building here Pragatisil in Palghar. As a bank, of course, we believe that every business needs a soul and a conscience. And that is where SBM Bank, for the past almost 3 years now, has been very closely associated with GEV. I am sure when you arrived here, you would have seen the branch of SBM Bank here. It's a very unique branch that we set up, taking into account the ecosystem without disturbing the ecosystem. It's a container branch which we created here. It is one of the first of its kind in the banking industry. And the reason for doing this was to see that as a bank, we have to be socially conscious. We have to be environmentally conscious. And this was an initiative which we took as a stepping stone into the world of a socially conscious banker. Built away from the city, in the midst of the Bharat, as we call it, this also needs quality banking. And even in these places, here as a bank, we have tied up with GEV in seeing that various objectives which are there in developing the ecosystem, in seeing that the locals who are there are provided a support system. And as also as part of Beyond Banking, as part of the CSR initiatives, multiple initiatives have been put in place. And the idea here is, besides this branch here, we have also another branch and we are opening 2 more branches. We have tied up with GEV here to see that the overall development under a theme called Pragatisil Palghar. Our intention of the bank is to see that how we translate this into a positive impact in bringing about significant changes in the lives of people who are in this district. We all know we are staying in a very well interconnected, dynamic and fast evolving world. And no progress can prosper by remaining disconnected or isolated. In this metaverse of opportunities that are there, that lie amongst us, the need for banking would always be a very core and nervous system and is more important than earlier. With all of the dignitaries coming here and global minds who are coming here today, I am elated that we continue to go ahead and grow together with GEV and the various initiatives we are taking, which also reinstates the old adage saying that Vasudeva Kutumba, which means the world is one family. I leave you with this sense of optimism. And as we all know, the internal theme of the C20 is Purusartha and Prakriti. The 4 Purusarthas, which includes Dharma, Artha, Kama and Moksha, we'll need to see that how we value them, and also as a socially conscious citizen, how we live to this thinkings which are there. And the spirit or consciousness, the energy which are there, which governs our reality and life. I leave you with these thoughts. I will not take much time. Thank you once again, gentlemen. Ladies, thank you. May I request you to play the video, please?
Mr. Siddharth, requesting you to kindly stay back on the stage. Firstly, I would like to take this opportunity to thank you and SBM Bank India for your constant support, your relentless support in all the development projects and initiatives that happen, be it Atmanirbhar Bharat or C20 now. Thank you so much for your kind support. It is because of your generous support that we keep doing events like these. Thank you so much. And on that note, I request Dr. Dange to kindly join the stage and present a token of appreciation to Mr. Siddharth Rath. Let's have a huge round of applause for Mr. Siddharth Rath and SBM Bank India for their kind support to all our initiatives. Thank you, sir. And Dr. Dange, I request you to kindly stay back on the stage to set. Yeah. Oh, okay. We have one more video of. Let's have a look at another video of SBM India Limited. Once again, thank you so much, SBM India. We are glad we have this association between the bank and Govardhan Eco Village. And this association will only and only prosper over the years. On that note, I now request Dr. Gajanan Dange to kindly take the stage to set the context for the upcoming discussions for the day. Thank you. Let's please welcome Dr. Dange with a huge round of applause. ये बहुत ज्यादा ठंडा है। उद्घाटन के लिए सभी का धन्यवाद। हमारी ये परंपरा है, वादे वादे जायते तत्वबोधः। हम लोग चर्चा करते रहेंगे और चर्चा से नवनीत उभर कर आएगा, जो केवल अपने देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान करेगा। ये G20 के प्रेसिडेंसी के समय में एक विशेष बात भारत के प्रबुद्ध लोगों की चर्चा में आई है कि हम लोग भारत की वैचारिक पृष्ठभूमि को इस प्रेसिडेंसी के समय में विश्व के सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। हमारी अपनी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है जो जीवन शैली से संबंधित है, जो विकास से संबंधित है। ऐसी अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को हम लोग विश्व के सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। तो जब हम लोग विभिन्न वर्किंग ग्रुप्स को देखेंगे और विभिन्न वर्किंग ग्रुप की चर्चा को देखेंगे, तो हम लोग कुछ सूत्र विश्व के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। डेवलपमेंट सेक्टर में हम लोग एक सूत्र को चर्चा के लिए सबके सम्मुख रखना चाहते हैं कि आने वाले समय में सेंट्रलाइजेशन के बजाय डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए।
भारत ये चर्चा में लाना चाहता है कि राइट बेस्ड अप्रोच के जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अप्रोच को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और सबसे अहम बात, आज विश्व में जो एक गोल बेस्ड फ्रेमवर्क तैयार हुई है, उस गोल बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ साथ भारत अपनी प्रेसिडेंसी में वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क की चर्चा आगे बढ़ाना चाहता है कि ये गोल बेस्ड फ्रेमवर्क के साथ जब तक वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं मिलेगी तो विश्व सस्टेनेबिलिटी के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये अपने चर्चा का आधार है, जिस चर्चा के आधार पर हम लोग विभिन्न विषयों में चर्चा चला रहे हैं। जैसे फूड विषय को लेकर जब हम लोग चर्चा की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे थे, तो भारत अन्न की प्रक्रिया को, अन्न की ओर किस प्रकार से देखता है। हमने कभी अपने दृष्टिकोण में कंपार्टमेंटलाइजेशन को स्थान नहीं दिया है। हम हमेशा किसी भी विषय को जब देखते हैं तो परिपूर्णता से देखते हैं। हमारे चिंतन में हम अन्न को भी एक परिपूर्णता से देखने की बात रखते हैं। और हम लोग जब अन्न के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग भूमि की चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा यह मानना है कि स्वस्थ भूमि यह स्वस्थ वनस्पतियों का आधार है, स्वस्थ भूमि यह पशु पंक्षियों की स्वस्थता का आधार है, और स्वस्थ भूमि यही मानव के स्वस्थता का भी आधार है। इसीलिए आप देखेंगे कि वन हेल्थ की कंसेप्ट के ऊपर विश्व की चर्चा भारत चला रहा है। तो ये जो वन हेल्थ का कंसेप्ट है, तो हम सब लोग भूमि की स्वस्थता के बारे में इस बार चर्चा को प्रारंभ करना चाहते हैं कि जब हम कभी फूड की चर्चा करेंगे तो हम लोग भूमि की स्वस्थता की भी चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु जो हम लोग फूड और लाइफस्टाइल में चर्चा करने की बात रखते हैं कि फूड एज अ मेडिसिन। इस विषय को लेकर विश्व में विभिन्न स्तर पर चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। हम लोग भी इस बात को बढ़ावा देना चाहते हैं कि कैसे भारत अन्न को ही औषधि मानता है। इसके साथ में हम लोग जब चर्चा चलाना चाहते हैं तो जैसे अभी इजराइल की बात रखी गई, हम लोग यहां पर हमेशा प्रकृति के साथ मेल मिलाप करके ही जीवन शैली चलाने की बात रखते आए हैं। दो शब्द और दो संकल्पनाएं भारत में बहुत विशेष है। हम लोग कहते हैं कि हमने अपना जीवन ऋतुचर्या के अनुसार चलाना चाहिए, और हम लोग दूसरा शब्द प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं कि ऋतुचर्या के अनुसार हमारी दिनचर्या डिजाइन होनी चाहिए। यह हमारी एक मान्यता है कि ऋतुओं के साथ अलाइनमेंट करते हुए ही हम लोग अपनी जीवन शैली को पर्यावरण सम्मत रख सकते हैं। तो जब हम लोग आहार की चर्चा करेंगे, जब हम लोग अपने डिस्कशन में आहार की बात रखेंगे, तो हमारी जो मान्यताएं है कि किस ऋतु के अनुसार क्या खाना चाहिए, किस ऋतु के अनुसार क्या नहीं खाना चाहिए, हम लोगों का ये संडे और मंडे समान नहीं है। हम लोगों का अपना हर दिन अलग है, हमारी हर दिन की प्रक्रिया अलग है, और हम हर दिन को समान नहीं मानते। सभी बातों को हम समानता से नहीं देखते। चंद्र और सूर्य की गति से हमारा जीवन को आधार बनाकर हम लोग जीने की प्रक्रिया चलाते हैं। हम लोग इसीलिए हर दिन को उस प्रकृति के अनुसार ढालने की प्रक्रिया करते हैं, और हमारा जीवन जितना अलाइंड रहेगा, हम लोग मानते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल्स बढ़ाकर जीडीपी बढ़ाना नहीं चाहते। हम लोग स्वस्थ जीवन शैली बना करके देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं। तो अपनी ये मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं के आधार पर हम लोग विश्व को ये चर्चा कराना चाहते हैं। ये G20 का ये सही प्लेटफॉर्म है, समाज के C20 का ये सही प्लेटफॉर्म है कि हम लोग इन मान्यताओं को दृढ़तम पद्धति से सबके सम्मुख रखें, इसके ऊपर समाज के राय ले। एक और बात हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना परिसर अपनी पहचान। जब हम लोग धीरे धीरे प्रकृति की ओर चलने की बात करते हैं, तो हम लोगों को ध्यान में आता है
कि हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते आए हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र हम लोग बसते हैं, वहां की भूमि, वहां का जल, वहां की विविधता, वहां के पशु, वहां के पंछी, वहां के माइक्रोब्स, ये हमारी पहचान होती है। इस विविधता का सम्मान करते हुए हम लोगों ने जीना सीखा है, इसीलिए हम लोगों ने हमेशा विविधता का सम्मान किया है। और इस विविधता को ध्यान में रखकर हमने अपने फूड को डिजाइन किया, हमने अपने पशुओं को डिजाइन किया। आप हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जितने भी भारत में पशुओं के ब्रीड्स तैयार हुए हैं, वो सारे प्रकृति के साथ अलाइनमेंट करते हुए हम लोगों ने तैयार किए हैं। कहाँ ड्वार्फ चाहिए, कहाँ बड़ा चाहिए, कहाँ फूड कन्वर्शन रेशो अच्छा चाहिए, कहाँ ड्रॉट टॉलरेंट चाहिए, इस प्रकार से हम लोगों ने ब्रीड्स तैयार किए। और केवल ब्रीड्स ही नहीं, हम लोगों ने सीड्स भी वैसे ही कंजर्व किए कि जिस क्षेत्र में जो जीन चाहिए, जिस क्षेत्र में जिस बात की प्रचुरता है, जो जीन जिस क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी में फलता फूलता है, उसी जीन को हमने डिजाइन किया। हमने हर बार प्रोडक्टिविटी इस स्ट्रेन को ही बढ़ावा नहीं दिया, हमने रस को बढ़ावा दिया, हमने सुगंध को बढ़ावा दिया, हमने सौंदर्य को बढ़ावा दिया। हम लोगों ने विश्व में, प्रकृति में उपस्थित सभी विविधताओं का सम्मान करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। इसीलिए जब हम लोग फूड की बात करते हैं, तो फूड को भी हम लोग विविधता से देखने की प्रक्रिया करेंगे और इस विविधता का सम्मान करने की प्रक्रिया करेंगे। इसके साथ साथ जब हम लोग इस विषय को समग्रता से देखते हैं, तो भारत ने हमेशा विज्ञान के साथ साथ श्रद्धा को भी जोड़कर देखने की प्रक्रिया की है। और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने समाज जीवन में विविध प्रकार के उत्सव और त्योहारों की रचना की है। ये हमारे उत्सव और त्योहार प्रकृति के उत्सव के साथ अलाइन करने की हम लोगों ने प्रक्रिया बनाई है। और इसके द्वारा हम प्रकृति में जो निसर्ग के साथ एक उत्सव होता है, जो उमंग होती है, उस उत्सव को अपने जीवन में ढालने के लिए हम लोग उस प्रकार के त्योहार और उत्सवों की रचना करते हैं। और उस त्योहार और उत्सवों की रचना के आधार पर हम लोग अपना खान पान और रहन सहन डिजाइन करते हैं। तो ये जो हमारी अन्न की ओर देखने की धारणा है, इस अन्न की ओर देखने की धारणा को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग विकेंद्रित पद्धति से, डाइवर्स पद्धति से, अलग अलग प्रकार के फूड के अलग अलग प्रकृति की रचना के आधार पर, एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम के आधार पर, जितनी भी डाइवर्सिटी है उसके आधार पर हम लोग फूड की चर्चा करेंगे। उसी के आधार पर हम लोग स्टोरेज की चर्चा करेंगे, उसी के आधार पर हम लोग डिसेंट्रलाइज मार्केटिंग की चर्चा करेंगे, और उसी के आधार पर हम लोग वेस्ट की भी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो भारत की कल्पना है कि आहार के आधार पर मन शुद्ध करना और शुद्ध मन के आधार पर प्रकृति के उन्नति की कामना करना, इसके लिए ही भारत ने इस बार जो टैगलाइन रखी है, वो रखी है वसुधैव कुटुंबकम। क्योंकि हम लोग अपने फैमिली में अपने परिसर के सभी को मानते हैं, और इन सभी के आहार की चिंता हम लोग मानव के नाते हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। इसीलिए ये जीवन शैली के लिए हम लोगों ने टैगलाइन रखी है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस आधार पर हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करेंगे। यह प्रारंभ बिंदु है। हम लोग बहुत सारी संस्थाओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। इस्कॉन के द्वारा ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये इस चर्चा का प्रारंभ बिंदु है। हमारे पास अगला और 1-1.5 महीना है। यहां से जाने के पश्चात हम लोग विविध प्रकार की अपनी कल्चरल बातों को लेकर, अपनी विविधता को लेकर, अपनी ग्रामीण मान्यताओं को लेकर, हमारे बीच में ग्रामीण मान्यताएं हैं, आहार के संबंध में हमारी कुछ मान्यताएं हैं, जो हमारी ओरल ट्रेडिशन है, जो हमारी मौखिक ज्ञान परंपरा है, ऐसी मौखिक ज्ञान परंपरा में भी हमारी कुछ मान्यताएं हैं। उन मान्यताओं को भी हम लोग डॉक्यूमेंट करने की प्रक्रिया करेंगे, और इसके आधार पर हम लोग इस फूड, इस विषय की एक समग्र संकल्पना को विश्व के सामने एक पेपर के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों से निवेदन है कि ये कॉन्फ्रेंस एक प्रारंभ बिंदु है,
हम लोग इस चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाएंगे, कुछ ऑनलाइन सेशंस, वेबिनार्स करेंगे। आप लोग अपने कुछ अभ्यास के वीडियोस भी स्वतंत्र रूप से बनाकर भेज सकते हैं। C20 के लाइफ के चैनल पर वो अपलोड किए जा सकते हैं, जिसके द्वारा आपको एक विशेष सूत्र चर्चा में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ऐसे विशेष भारतीय सूत्र को भी आप बढ़ावा दे सकते हैं। आप लोग अगर कोई विदेशी पार्टनर्स के साथ में कुछ अच्छे कार्यक्रम उपक्रम चला रहे हैं, मिलकर के कार्यक्रम उपक्रम चला रहे हैं, कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स के बारे में आपके मन में कुछ अच्छे सुझाव है, कुछ अपनी परंपरागत रचना के आधार पर वेस्ट कम करने के लिए हमारी कुछ मान्यताएं है, तो आप उन सब लोग अपने को लिखकर या वीडियोस बनाकर आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि ये जो हमारी चर्चा के द्वारा नवनीत निकालने की पद्धति है भारतीय, उसके आधार पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे और अन्न को समग्रता से देखने की एक पृष्ठभूमि, एक भारतीय वैचारिक पृष्ठभूमि विश्व के सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर डांगे के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर डांगे। और ये जो आपने एक लाइन कही है कि हम स्वस्थ भारत बनकर हमारे जीडीपी को बढ़ाना चाहते हैं, दोस्तों उस लाइन के फिर से एक बार जोरदार तालियां। Such a brilliant thought. India is indeed a country which is diverse in its culture, but at the same time diversity in soil also we see it here in our country. विविधता को ध्यान में रखकर, जैसे सर ने कहा, विविधता को सम्मान कर हम फूड, हमारी लाइफस्टाइल, ब्रीड्स और सीड्स सभी को डिजाइन करते हैं। एंड दिस इज सच अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल दीज important topics throughout the day. And yes, today we'll have a lot of brainstorming sessions, a lot of panel discussions, and we have a lot of speakers who will be joining us. Yes, we'll have a lot of panel discussions. We'll have some speakers who are also joining us live virtually. But before that, before we officially kickstart the discussions for the day, I request Prabhuji to kindly take the stage once again. Let's please welcome Prabhuji with a huge round of applause. So as we are moving into the technical discussions, before that, I just wanted to extend a warm gratitude to all our support people right from the time the Govardhan Eco Village was established. His Holiness Radhanath Swami Maharaj, who is the visionary behind this project, and he was supported in a big way by the Dr. N.D. Desai's family, Maithili Devi, who's running a beautiful skill center nearby, and their son Kushal Desai, who's been very much instrumental as part of the support. This whole family has been a great support for the Govardhan Eco Village. Then we have Mr. Rishikesh Mafatlal, who's right here. He's the chairman of the BIAF and also very, very closely associated with the development of Govardhan Eco Village right from the last 25 years. And along with that, we have Mr. Rajiv Srivastav and Mr. Sanjeev Maheshwari, both who lead the Basil Partners. Their contribution has been truly, truly important for the development of the Eco Village. So we would like to give a round of applause for all of these supporters of Govardhan Eco Village for many, many years. With respect to this particular conference, I would like to specifically mention the following and express gratitude from me as part of the Govardhan Eco Village team. The C20 sponsors, VRL Logistics. We have Anand Sankeshwarji as the CEO representing here. C20 sponsor SBM Bank, State Bank of Mauritius, Mr. Siddharth Rath. Foresight Bullion, Mr. Viraj Didwania. Refresh Wellness, who's both given us financial sponsorship as well as you'll get gift packs. So Refresh Wellness represented by Mr. Jignesh Desai. Neodocs, healthcare startup by a group of IITians, CEO Nikunj Malpani and his team. Kesar Sweets, Divya Arora ji, who's present here also with various sweet boxes. And Prabhu Sriram Agarbattis, Prashant Kumar, who has created Ramayan based, agarbatti packs. So
Many of these have also set up their stalls in the other part of the Satsang Bhavan. If you walk out of the auditorium, then you will see from the other side Govardhan Rural Development exhibition, and then after that there are exhibits of all of these various people who are showcasing what they are doing. So when you are leaving, you would be getting 4 gift packs. So please, if you need any help to carry, please do let us know, but make sure that all of you do take some of these with you, because it has been given with great love and affection. So a round of applause for all of these people who have made this conference possible. Because when Gajananji told me, last time, few months ago, that we have to do this, so we didn't know, how the enthusiasm level would be, but we are very grateful for all of them. Also, in one of the conferences I did in February, I came across 2 really amazing personalities who, when the lecture and the topic of the conference is going on, simultaneously convert that into art. So we have with us Mr. Ajay Gupta and Santosh Nair, who many of you may be wondering what are they doing on the side, because they are not children who, have been given some crayons to work with to avoid disturbance, but they have created a very unique genre of art, where as the conference proceedings are happening and when the subject is being spoken, they simultaneously create that into a beautiful pictorial view. So thank you very much, Ajay and Santoshji, for adding another flavor. And I'm sure because it is Kali Yuga, we don't remember everything we hear. So on the way, you can always take a picture at the end of the conference. So you have captured practically whatever has been spoken in the form of graphics. Thank you all very much. And thanks to our main organizer, Pallavi ji, along with Siddharth Kajuria and Anup Goyal, who have been responsible for coordinating this entire conference. And we have the MCs, Misha and Anaga, who have been, so wonderfully leading us in this journey. Sorry for the interruption. Please continue. It's your stage, Prabhuji, always. And thank you so much for expressing your gratitude to our partners. Ladies and gentlemen, let's take 1 more minute and give a thunderous round of applause for all our partners for the day, and also requesting all of you to kindly explore the beautiful stalls, the exhibition stalls outside in the pre-function area. And on that note, ladies and gentlemen, like I mentioned, today we just don't have delegates, speakers, panelists, moderators who have joined us physically, but we also have some of our dignitaries who are joining us virtually in this summit. Hence, without any further ado, let me quickly welcome on the screen 2 of our speakers. Let's first begin with Dr. Vijay Nambiar. Chenny Cherry Vijay Nambiar was born on August 1943. He's a retired ambassador of India and Under Secretary General of the United Nations. He is a principal coordinator Sherpa of India's G2 presidency. Welcome, Dr. Nambiar. And we also have with us Mr. Kiran DM. Mr. Kiran DM is the SUS Sherpa at Civil 20 and a founding trustee for Youth for Seva. He has formerly served as the CEO at ONGC Foundation. Welcome, Mr. Kiran. And on that note, over to you, Dr. Vijay. Thank you. Thank you. Do you hear me? Yes, sir. Oh, thank you. Thank you. Let me first comment on your calling me with Chenicheri Vijay Nambiar. This is something which has not normally been done. As a person who was born in Pune and brought up in Bombay, I had adopted the Maharashtrian way of my name. That is my first name, my father's name, and then my surname. Whereas in Kerala, it should have been the way you mentioned it. The village name, the family name, and then myself. Thank you very much. I am most grateful to Swami Gaurang Das ji and to the distinguished patrons of the Govardhan Eco Village, and of course, most importantly, to Dr. Gajanan Dange for the absolutely fantastic work they are doing over here. And as he just mentioned, Dr. Dange just mentioned, actually the working groups under the C20 have brought out a specifically Indian conceptual framework in the course
of their discussions. And he outlined some of the features of this particular Indian conceptual framework when he talked about decentralization as against centralization, when he talked of responsibility rather than rights, and when he talked about values rather than goals. I think these are continuing reminders of what we may call the specific Indian conceptual framework. Now, it is not that this is not being done elsewhere. I've been in China, for example, there is a certain conceptual framework, but the kind of worldview, the Weltanschauung that you see in India, it's far more surpassing. And this is an opportunity for us to be able to present that particular viewpoint. The civil society component of the C20 is chaired, as you know, by Amma, by Mata Amritananda Devi. And she has embraced the entire human family, humanity as a family, in keeping with the motto of Vasudhaiva Kutumbakam. Now, Mission LiFE, which was launched by the Prime Minister in October last year, also symbolizes the determination of the country as a whole of India to symbolize how we would take cognizance of our responsibilities for the environment in terms of how it impacts on our lifestyle. Now, obviously, food is an important area intimately connected with cultivating a new lifestyle for environment. We often consume food without thinking about its impact on our bodies and the world around us. In fact, the food industry has become a battleground of exploitative consumerism, where health standards are often ignored and the use of preservatives, etc., cause serious harm to our health. And we actually today are faced as much with the problems of obesity, high blood pressure, diabetes, as we are with problems of poverty, malnutrition, and stunting, etc., at the rural level. So there is a strange contrast that we face in our lives in India itself. But it is by going back to the roots and promoting the healthy habits embedded in our culture, as emphasized by Dr. Dange, that we will be able to, in a sense, reintegrate our food with our traditional, our traditions and our culture. In fact, even I'm not an expert on spiritual issues, but the Bhagavad Gita itself talks about food, the food that increases life, energy, strength, health, joy, and cheerfulness, which are savory, substantial, and agreeable, are dear to the Sattvic, as they say. Anyway, the International Year of Millets is a perfect example of promoting traditional foods that are both healthy and sustainable. What we need is to prioritize food that promotes a healthy lifestyle, as what we consume determines our conduct, behavior, efficiency, and way of life. Indian farmers and the economy have been practicing organic agriculture for centuries. Therefore, it is not a new concept, but it's a necessary one that we need to adopt in modern times. The Global Crisis Response Group on Food, Energy, and Finance has called on G20 leaders to support food systems and transformation of food systems, and to substantially scale up financing of food systems, which actually includes measures for that target and farming, nutrition, social protection, water, and irrigation. Even the United Nations recognizes the power, particularly of the youth, in creating innovative solutions, volunteering, and building resilience in local communities. Young people have shown that they are at the forefront of developing solutions and are pillars of the community in developing in this field too. And we have seen this in the Youth Lead Innovation Festival and Solutions, and most prominently, as we are seeing here in the Eco Village, in the Govardhan Eco Village that you have, and most interestingly, even in the approach being adopted by your creative artists over here, Ajay and Santosh, which Swamiji just talked about. Now, we have a responsibility towards future generations to protect their basic human right, the right to a clean, healthy, and sustainable environment.
Now, it is the right of the next generation that becomes a responsibility for us today. We need to act to improve access to safe and nutritious food and bolster food security, not just in terms of more food, but as Dr. Dange has said, also in the various aspects depending on specific ecosystems that are diverse in diverse areas of the country, as also in diverse areas of the world, especially in terms of the more vulnerable areas in the world. I had not expected to give much technical input to this meeting, but let me say at the end that food plays a critical role in our lives, and we need to pay more attention to what we consume and how it affects our health and environment. And we need to promote traditional food habits and organic farm practices and create a healthier and sustainable future. After all, there is a very simple and straightforward Hindi saying which says, "Jaise ahar, vaise vichar." I think that's what we need to build up. Thank you very much, ladies and gentlemen, and I hope that your seminar today is very, very successful and enriching. Thank you. I now request my team to kindly have Mr. Kiran DM on the screen. And of course, a big thank you to Dr. Vijay Nambiar for that lovely message and for joining us here virtually. Let's have one more round of applause for Dr. Nambiar, please. And on that note, we have Mr. Kiran DM joining us. Yes. Welcome, sir. Pranam to everybody. It's really wonderful to be part of this deliberation, Food and Life. And I think after listening to Gajanan ji and Vijay ji, they have set a context on what should be the focus of not only today's discussion, but also look at what should get into the policy pack, because ultimate thing is how do we get these ideas and thoughts as recommendatory into the policy pack. Now coming to Food and Life, I think the journey of food in everybody's life starts with the mother's milk and ends with either Tulsi Jal or Ganga Jal, at least in Indian context. So if you look at today's global mothers feeding, it is less than 50% of the mothers feed today. So the moment a child is born, we start with powdered milk, and then we expect the child to have a lifestyle which will be coexistence with environment, is a kind of a mockery of expectation. So I feel that the journey of food starts with mother. So the more the mother is able to feed, the breastfeeding happens, then the sanskar part is automatically that comes into the play. And food develops habit. And if you look at in India or elsewhere in the globe, every 50 to 60 kilometers you travel, the style and variety of food changes. But today we are come to a stage we kind of want the same food available in every place, which is not what is healthier for the conditions which are prevailing in those places. So one has to understand that the kind of food what we eat should be suitable for where we live. And on one side, the scientific method of eating to the scientific method of distribution. So it is kind of we need to look at all these ends, and today's conference, I think, will discuss on the quality of food, the kind of food, distribution, how food wastage should not be there, and the sattvic habits which will lead to healthy lifestyle. And ultimately, that is what is expected as an outcome of this conference. I wish all the dignitaries and the delegates wonderful discussion. Thank you.
Thank you so much, Mr. Kiran, for joining us virtually. And thank you for that wonderful address. Looking forward to all the topics that Sir just mentioned on the screen. Looking forward to the brilliant brainstorming sessions that we'll have throughout the day. And on that note, I now request Mr. Sunil Nalwade from VRL to kindly join us on the stage to present and talk a little about VRL. Let's please welcome Mr. Sunil with a thunderous round of applause, everyone. Pranam Gurujis, respected dignitaries and all participants. As I said, we are totally in different world today. And from morning, we are hearing, a lot of discussions on the different topics. So with this contest, really, I am very thankful to the organizers who gave opportunity for us to sponsor as a title sponsors for this event. I really thankful to you. And in my world, I want to give just brief about VRL logistics. PPT. Yeah, VRL logistics started in the year 1976 by Dr. Vijay Sankeshwar. He started with one single vehicle in a small town in Karnataka. And he is a first generation entrepreneur. Today, we are operating across the country. Later on, his son also joined his hands, Dr. Anand Sankeshwar. And if we see today, VRL is one of the leading surface logistic company in India. We are having a nationwide presence, and we are having a 46 years of rich experience in this industry. We ourselves claim it as a large size and scale operations because it is highly unorganized sector in India. You know the other logistic companies, there are many number of operators, but organized players are very limited. So we are one among them. And we are having a proven track record on the quality, reliability of service and on-time delivery. When it comes to the large scale of operation, I want to mention some key points here. We are carrying almost around 11,000 metric tons every day, and our vehicles are covering almost around 10,30,000 kilometers on a daily basis. So we are having around 5,700 plus goods transport vehicle and having a total carrying capacity of around, say, 80,000 plus tons. We are having a dedicated customers of around 8 lakh customers across the industry. When it comes to the presence in India, we are operating in 24 states and 4 union territories, and we are having around 1,200 goods transport branches across the country. And as you know, COVID also impacted our business also, but later on our expansion story has enhanced, and we opened almost around 200 branches in the current year itself, and it is growing further. When it comes to the food industry as such, we are carrying wide range of commodities across India. But when it comes to food, we are carrying many commodities, be it of food grains, be it as sugar, coconut product, the processed food, tea powder, cashew nuts, dry products. So we are carrying all commodities which are not required any special kind of a storage, and we are moving from one state to another state. Yeah, this is what about our number of products, what we are carrying. Food product is part of our product. Apart from that, we are carrying automotive parts, hardware, metals, spare parts, etc. Next slide, please. So this is the food. Within the food sector, we are carrying all kind of commodity. You name anything which is not required special kind of storage or cold storage, we are carrying such commodities across India. Next. These are some of the clients actually I want to mention, like Haldiram, ITC, GRB Dairy, MTR Food, Reliance Retail. So for all these customers, actually, we are supplying the product. I want to highlight here one customer, Sri Satya Sai Annapurna Trust. Actually, we are carrying millets. They are having, their ashrama in Muddenoru, nearby Bangalore.
They are supplying millets across the country wherever required to the needy people. So we are transporting these products. We are joining hands with them and supplying these products to the needy people. Next. Just I want to mention about how we are really contributing in the food industry. We are carrying all famous GI products in India. See, one is about the Badgi chili. The moment you eat any spice in India, it is supplied through or it is made up of Badgi chili. It is one of the famous product in Karnataka. Like in Assam tea, we are transporting Assam tea across the country. Almonds we are carrying, black pepper we are supplying, cashew nuts. Every day we are carrying almost around 400 to 500 tons of cashew nuts from Kerala and Tamil Nadu borders to across the country. And the Sirsi Supari, Wayanad Jerry, and Travancore Jaggery, Makana is available only in the Bihar state, but from Bihar to rest of the country, we are supplying this product. Gulbarga Tur Dal, the another product which is from the Karnataka. See, any dal in India, whatever the product or dal from the Kalburgi or Gulbarga, it is very famous. It is a very taste is totally different as compared to other dal. We are transporting this commodity to across the country. Next. And as a nutshell, we are just, I want to say that we are balancing the economy. Basically, the whoever producing, we are supplying to the consumers. That's what we are into. And the promoters of the company are also in the other business. Say, apart from URL, they are into Vijayawani. This is #1 Kannada daily newspaper in Karnataka. And the promoters runs also the television channel, which is Digvijaya. It is one of the leading television channel in Karnataka. And apart from this, we are having a vision and travel also. We carry passengers, especially in south and western states with our luxury buses. So with this, once again, I am very thankful to the organizer giving us opportunity. Thank you. We would love to have the video, please.
A huge round of applause for the entire VRL team. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sunilji, Mr. Sunilji, for your support. Looking forward for your support for our future projects. Next, I would love to talk about our grassroots innovators. Grassroots innovation is defined as innovative product or process created at the bottom of the pyramid, usually due to necessity, hardship, and challenges. We have our 5 grassroots innovators. First, I would like to invite on stage Srimati Mamta Bai Devram Bhangre. Mamta Bai comes from Devgaon village of Akola block of Ahmednagar district. She developed nutrition garden with fruits, vegetable and wild edible plants, about 40 to 45 species. She will be presenting her work on conservation of wildlife, edible plants and revival of traditional food recipes. Mamta ji, मी तुम्हाला स्टेजवर यायचं विनंती करते. Please. A huge round of applause for Mamta Bai ji. तुमचे 2 शब्द आमच्या सगळ्यांसाठी मी विनंती करते की इथे येऊन बोलावे. नमस्कार, माझे नाव ममता देवराम भांगरे. मी अकोल्यावरून आलेले. तर मी एक शेतकरी महिला. शेतकरी म्हणजे नाजूक शेतकरी, कोरडवाहूची, कामची काही बागायत नाही, काही नाही. तर शेती पण करते आणि मी रानभाज्यांचा सुद्धा हे केलेले. आपल्या शेतामध्ये म्हणजे घरासोबत असे एक वाडग्यामध्ये रानभाज्या आणून लावलेल्या ते. त्या भाज्या आज आम्हाला माहित होत्या. आम्हाला पण म्हणजे माहित नव्हत्या, पण आम्ही आमच्या सासऱ्यांकडून, आई वडिलांकडून माहित करून घेतल्या. तशी माझी पण अशी एक इच्छा आहे का माझ्या पण सुना मुलांनी नातवंडा पतवंडांनी ह्या भाज्या माहीत झाल्या पाहिजे. त्याबद्दल मी त्या भाज्या आहेत ना, एकदम लांब होत्या, जंगलात होत्या, आता जवळ आणून घेतल्या. ते कोणी तुमच्या आमच्यासारखे येऊन बघत ती. आणि ह्या दिवसाला भाज्या नाही येते तर मी त्यांचे कंद काढून घरामध्ये ठेवले ते. मला तरी असं वाटत आहे का हे कंद प्रत्येक शेतकऱ्यांजवळ गेलं पाहिजे. प्रत्येक शेतकऱ्यांनी ते केलं पाहिजे. सगळ्यांनी माहिती पाहिजे ती भाजी खायची कशी, करायची कशी, ती केव्हा खायची, केव्हा काढायची, हे जर आपण जाणून घेतलं तर एकदम भारीच आहे. आणि आज म्हणजे इथपर्यंत रानभाज्या हे आपल्याला प्रत्येकाला माहितच होत्या, म्हणजे सगळ्यांनीच माहित होत्या. पण आज इथं आले हे झाले तर आम्हाला खरे म्हणलं तर बाईक संस्थेने लय मोठी मदत केली. आमच्या आई वडिलांपेक्षा आम्हाला त्यांनी जास्त हे माहिती दिली किंवा मार्गदर्शन केलं. तर यांचे मी पण खूप आभारी आहे. तर मला तरी असं वाटत आहे का मी आज इथं उभी राहिले तर त्यांच्यामुळेच राहिले. आम्हाला कधी गावातून बाहेर निघायचं माहित नव्हता, आम्हाला कधी मार्केटला जायचं माहित नव्हता, पण आज त्यांच्यामुळं आम्ही सारे जगभर फिरतो. एवढीच मी हे आहे. एवढं बोलून माझ्या 2 शब्द संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद ममताबाई जी, तुम्ही आमच्यासाठी एवढे टाइम काढला तुमचा. आणि तुम्ही 2 मिनिटं थांबता स्टेजवर इकडे. हा प्लीज तुम्ही बसा. थँक्यू की तुमचे 2 शब्द आम्हाला तुम्ही ऐकवले. आणि आता मी I would love to call upon stage Akshay Apte ji for the felicitation of Mamta ji. So please, ma'am, a huge round of applause for Mamta ji. Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause. Thank you so much, Mamta ji. And thank you so much, Ms. Apte, for doing the honors. Thank you. And on that note, it is now time to deep dive into our panel discussions for the day. Quick announcement before I invite our panelists and the moderator.
All our panel discussions will be 40 minutes long, which will comprise of a 30 minutes discussion amongst the panelists and the moderator, and a 10 minutes Q&A session with the audience. Everyone's clear with the timings? So 10 minutes will be for the Q&A session. So as and when our panelists are discussing, requesting you to keep all your interesting and exciting questions ready. On that note, let's now start with our very first panel discussion of the day, which is on hunger-free district. This discussion will be about hunger-free initiatives, nutritional self-reliance through kitchen gardens, and indigenous crop production, capacity building for addressing malnourishment, center of excellence, and institutions on nutrition and food, data self-sufficiency building on National Food Security Act 2013, non-conventional foods, and their role in food security, and also urban farming movement. And now let me welcome our moderator for the segment, Ms. Shipra Mathur. She is an independent journalist and communicator with 25 years of experience in mainstream media and media education. She specializes in change journalism, development communication, and promoting citizen journalism in rural India. Our first panelist for the segment is Dr. P.V.S. Suryakumar. Dr. P.V.S. Suryakumar is an experienced professional who has worked with NIPARD since 1986. He holds a master's in plant genetics from the Indian Agricultural Research Institute and a master's in sustainable development from Staffordshire University in the UK. Our next panelist of the segment is Dr. Gurudas Nulkar, who is joining us virtually. So, ladies and gentlemen, Dr. Nulkar is a professor and director at the Center for Sustainable Development. He has a PhD in industrial sustainability and environmental management and is the recipient of the 22nd Devang Mehta Award for Best Professor of Management. He'll be joining us virtually for this segment. Our next panelist, our last panelist for the segment is Mr. Arun Poddar. Mr. Poddar is a co-founder of Kaivalya Education Foundation, which envisions creating public system change in Indian education by fostering competent and passionate leaders who can create a large-scale sustainable impact at the grassroots level. Thank you so much, panelists and moderator, for joining us. Let's have one round of applause for this panel, please. And on that note, over to you, Ms. Mathur. Namaskar, Prabhuji. Namaskar, Dangi Sahab. It's an honor to be here after 10 years almost. I was sitting here 10 years back, and that was a transformative moment for me also, to know this institution, their work, and their contribution. भूख और गरीबी की जब बात होती है, तो मुझे एक हमेशा लगता है कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी अगर कोई हो सकती है, तो वह भूख, गरीबी और पलायन। और जब मैं इन आर्टिस्ट को जब ये बनाते हुए देख रही थी कि किस तरह से आर्ट के थ्रू हम अपनी बात कह पाते हैं, तो सादत अली मंटो ने कहा कि दुनिया की जितनी लानतें हैं, भूख उसकी माँ है। और बात वहां से शुरू करती हूं, मैं राजस्थान से क्योंकि आती हूं, कि हमारी लोक परंपराओं में ये जो त्रासदियां हैं, इनको कैसे सहेजा गया। और वहीं से कहीं मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर रही हूं, क्योंकि हम हंगर फ्री डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं कि हम आजादी कैसे पाएं इस भूखमरी से, पोषण की कमी से और गरीबी से। तो एक बहुत दमदार कहानी राजस्थान की मुझे हमेशा याद आती है, क्योंकि वो कहानी कि जब अकाल पड़ा, जिसे छप्पनिया अकाल कहा जाता है राजस्थान में, और हमारी इतिहास में हम पढ़ते हैं छप्पनिया अकाल पड़ा था, जब 2.25 करोड़ लोग भूख के शिकार हुए थे और मौत के शिकार हुए थे। और अनगिनत उसकी शायद कोई गणना भी नहीं है कि कितने मवेशी उस अकाल में मरे। और 56 मतलब 1956 नहीं, वो विक्रम संवत वाला 1956, 1899 से 1900 के बीच में वो अकाल पड़ा था। और जब वो अकाल पड़ा और वो जो त्रासदी जब हमने देखी, उस दौर में देखी, राजाओं का दौर था, लोकतंत्र उस मायने में नहीं था, हालांकि हम लोकतांत्रिक परंपरा से ही इवॉल्व हुए हैं। भारत की जो परंपरा है वो लोकतांत्रिक, उसकी मिट्टी में, उसकी हवा में, उसकी जहन में, उसकी बोलचाल में, उसकी भाषा में वो लोकतांत्रिकरण हमेशा हमारे भारत में रहा है। तो वो जब अकाल पड़ा
और वो जो मौतें हुई उसमें से जितने भी लोग जिंदा रहे, क्योंकि वो वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान का इलाका था, जितने भी लोग जिंदा रहे, ये बहुत कमाल की बात है, उनको जिंदा रखा खेजड़ी की छाल ने। जो खेजड़ी का पेड़ है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है, लेकिन नई पीढ़ी शायद उससे आज भी परिचित नहीं है कि हमारा राज्य वृक्ष है, क्योंकि उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इतनी है कि वो उस भयानक स्थिति में भी, वो जो पशु थे, वो जो इंसान थे, जो छाल अगर खा पाए, उनके हाथ लगी तो वो जिंदा रह पाए। और उससे आगे की बात एक और ये है कि हमारे कैसे सिस्टम रिएक्ट करता है, कैसे व्यवस्था उस पर रिस्पॉन्ड करती है। तो जो गंगा सिंह जी थे उस वक्त बीकानेर के राजा थे और बहुत बहुत प्रोग्रेसिव राजा कहलाते थे। उन्होंने उस वक्त ये सोचा कि इस भुखमरी से, इस त्रासदी से मुकाबला करने के लिए हमें तैयारी क्या करनी पड़ेगी। और उस वक्त उन्होंने ये कहा कि राजस्थान में नहर लाऊंगा मैं। और तब लोग उन्हें सिरफिरा कहा करते थे कि राजस्थान में नहर कैसे आएगी। और उसके लिए उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से, जो ब्रिटिश हुकूमत थी, उससे एक बहुत लंबी कहानी, ये नहीं कि साल 2 साल 3 साल में हो गया होगा, 1 दशक 2 दशक लगा, जबकि उन्होंने, क्योंकि सरहद के कुछ ऐसे, क्योंकि रियासत काल था तो कुछ राजी होती थी, कुछ नाराजी होते थे, तो वो लीगल लड़ाई उन्होंने लड़ी। और सतलुज को, पंजाब से जो सतलुज है वो रेगिस्तान के रास्ते आई और गंग नहर बनी वहां पर। दिस वाज द रिस्पॉन्स जो प्रभु जी कह रहे थे और डांगे साहब कह रहे थे कि हमें रिस्पॉन्स की तरफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो मूव करना है, तो हमारी लोक परंपराओं में। और एक छोटी सी बात कह के, क्योंकि फिर हम पॉलिसी की तरफ भी बढ़ेंगे, और वो जो कॉन्टेक्स्ट में सेट करना चाह रही थी, उससे पहले ये बात भी कि जब हम हमारी कलाओं में कैसे और साहित्य में कैसे सहेजी गई ये जो हमारी त्रासदी थी। तो राजस्थान में आज भी वो जो 56 का काल है, 56 का अकाल है, बही खाते जो लिखे जाते हैं, बही खातों में वो 56वां पन्ना आज भी खाली छोड़ा जाता है। कैन यू बिलीव इट? हमारे यहां कहानी लिखी गई विजयदान देथा जी, आपने शायद नाम सुना हो, बिज्जी परिणीता कहा जो फिल्म बनी, उनकी उस कहानी पे बनी। उनकी मैं किताब अभी हाल ही में पढ़ रही थी, उजाले के मुहासिब। उनकी कहानियां पढ़ते पढ़ते आप मानेंगे नहीं कि मेरे न केवल रोंगटे खड़े हुए, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे उस कहानी को पढ़ते हुए। ये कहानी है आशा अमरधन, और वो कहानी फिर मैं रिलेट करती हूँ कि वही अकाल और उस अकाल की त्रासदी में मानवीय संवेदनाएं कैसे खो जाती हैं, कैसे एक परिवार जो है पलायन की त्रासदी वो हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो गुजरा है और वो जो गुजरी है जिस पर, उसको अगर लेखन में, उसको अगर साहित्य में, उसको अगर कला में सहेज लिया जाता है तो वो कैसे अमर हो जाती है। तो वह आशा अमरधन कि कैसे एक परिवार पलायन करता है, 2 बच्चों को पीछे छोड़ जाता है और घर बंद करके चला जाता है, लेकिन वो उम्मीद के सहारे जीते हैं। घर में जो पेड़ पौधे जो उगे हुए होते, नीम का पेड़ है, वो उनको पालता है साल भर। लेकिन जब आते हैं और जब उम्मीद, उनकी उन बच्चों की बहुत ही त्रासदी वाली कहानी है, उन बच्चों की मौत होती है जब सिर्फ इससे, जब उनकी आस टूट जाती है, उम्मीद टूट जाती है। भूख से नहीं मरते हैं, उम्मीद टूटने से मरते हैं। तो हमारी, फिर मैं क्योंकि थोड़ी सी डाइग्रेस हो जाऊंगी, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट था कि हमारे यहाँ हम कहते हैं कि बहुत पीड़ा भुगती है हमने, सदियों से भुगती है, लेकिन हम समाधान वाले समाज रहे हैं हमेशा। हमने हमेशा उसी त्रासदी में, उसी पीड़ा में समाधान निकाला है। तो हमारी, अगर हम नीतियों की बात करते हैं, दूसरे पैनलिस्ट हैं, उन्हें लगेगा कि हमारा समय जो है वो शायद कम हो जाएगा, लेकिन उस पॉलिसी पे आपको लाके छोड़ूंगी कि हमने जब पॉलिसीज बनाई हंगर और न्यूट्रिशन को डील करने की, तो 50 के दशक से ही पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। जब हमने हंगर फ्री इंडिया की भी बात करने की, फोर्टिफिकेशन का एक दौर शुरू हुआ, उसकी भी हम बात करेंगे। और हंगर फ्री इंडिया से आते आते हम उस दौर में आए जब हमने कहा कि हमारे पास एक अधिकार होना चाहिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर हम लोग 2013 में आते हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई तब्दीली उस मायने में नहीं दिखती है कि हमारा कोई न्यूट्रिशन में बेहतरी हो रही हो, हमारे समाज में उस तरह की, कैसे पेड़ पौधे और जो हमारा रिश्ता हुआ करता था, बंधुत्व का जो भाव हुआ करता था, सखा का जो भाव हुआ करता था, वो कैसे हमारा टूट गया। तो अधिकारों से बात नहीं बनी, और उस अधिकार के बाद हम आज के दौर में जब आए हैं, तो हम आज बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा की। और जितनी भी नीतियां हैं, और मैं उस पर अभी थोड़ा सा और बाद में आपसे बातचीत करते हुए, सो ओवर टू द पैनलिस्ट। आप नाबार्ड से क्योंकि जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि हम कितनी भी नीतियां बना लें, लेकिन जमीन पर जो हम आज भी महसूस करते हैं कि जमीन पर जो पर्कुलेट होनी चाहिए, ट्रिकल डाउन होना चाहिए,
और जो जमीन पर तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो डांगे साहब और जो हमारा शायद पर्पस है कि कैसे हम पूरे बॉटम अप अप्रोच के साथ, जब तक जमीनी तब्दीलियां नहीं होंगी, जितनी भी पॉलिसीज हैं, थॉट प्रोसेस है, वो जमीन पर, क्योंकि खेत तो गांव में है। और G20 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन इन G20 देशों का दुनिया की जीडीपी में है। 7% हमारी आबादी जो है वो G20 में रह रही है, और 75% कारोबार जो है वो इन G20 देशों में रह रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में और बढ़ जाती है। तो नाबार्ड के मार्फत आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारा रेंज ऑफ वर्क है कि हम कैसे, किस तरह की खेती को बढ़ावा दें, किस तरह के इनोवेशंस को बढ़ावा दें, और जो गैप्स हैं उनको फिल करने में इस सेक्टर की क्या भूमिका होती है। ओवर टू यू। एंड बियॉन्ड दिस, इफ यू थिंक दैट आई हैव नॉट addressed the point that you wish to raise, then kindly feel free to do that. Yeah, thank you. Small presentation. And Sure, please. Yeah, sure. Get the presentation on side. Before the presentation comes up, I think I'm extremely thankful for Prabhuji for giving us this opportunity to come and present what we do. Those of you who don't know what NABARD is, we're an autonomous organization. We are the development bank of the country. We supervise the rural financial organizations. We fund the state governments and banks for rural development. And we work with a whole host of civil society organizations across the country. Hey, this is the last one. I didn't even start. Thank you. The message is important, taking rural India forward. Yes, then so many things need to be put into it. Yeah. What I'm going to talk is primarily the reflection of what we understand as NABARD. And I think I'm going to answer whatever she asked. Next slide. Yeah. When we're talking about a hunger-free district or a hunger-free country, we're primarily looking at three issues which are very, very crucial: food security and nutrition security. I think she raised a point like we should all understand one important thing. When India became food secure, because of the scientific understanding which we got from the UK before we got independent, and the scientific understanding from the land grant colleges from the US after we became independent. You should understand the agriculture they follow is a different type of agriculture. It's basically temperate agriculture, and what we have is tropical agriculture. Nevertheless, we were in a very bad situation. From there, we became completely food secure. Now, and morning we heard there are issues which food security brought to us, which is primarily chemical-based agriculture that is causing a huge amount of problem. And second thing is nutrition security, which is really people are starting to realize we can't take zinc tablets, we can't take micronutrient tablets. This is what is happening. And then on top of it, we are now talking about climate change, how things are going to help, how things are going to completely go awry. So then in this context, since out of 140 million hectares of cultivated area, 70 million hectares is rain-fed. And natural farming is the best thing to happen. Honorable Prime Minister talks about it many, many times. But somehow we are not somehow, while we funded several projects which are working on the ground, we don't have projects of scale for a country of this size. So many people, many versions are being talked, but I think it's time we really look at it. We want to really do that. And one more, next slide. One more important practice whenever we're talking about a hunger-free district or a hunger-free country, we have several examples which work. For example, we're talking about this particular eco-village. We have no inventory, and how do we scale that up? That is really required. Best practices are required, inventorization is required. Okay, now everyone is talking about millets because 2023 happens to be the year of millets. I think those of you who don't know, in 1970, millets happened to be 20% of a food basket.
Now they're not even 6%. Why are they really not happening? There are many reasons, because rice and wheat, completely all the financing which happens for agriculture primarily happens for rice and wheat and nothing else. Because the millets, farmers don't require any loan. The productivity is as low as 600 kilos per hectare. This is very, very small. Time has come where we really need to look at the productivity part. And the most important thing about millets is, unless until millets are processed at the point of consumption, it really doesn't help. Because the moment you process the millets, weevils attack. And right now, whatever processing millets are being subjected to are those machinery which are made in Punjab, which are used for processing rice and other things. So recently, Honorable Finance Minister has announced a challenge where developing millet processing machines also is one of the things. Atal Innovation Mission has announced it, and they have recently announced the results also. And how do we really get the millets into our kitchens? Honestly, how many people sitting here eat millets every week? I think I saw 1 hand, 2 hands, 3 hands, 5 hands, 6 hands. I eat millets every day for my breakfast. The whole problem is the taste, developing the taste of it. And there is one more perverse nonsense. I'm sorry to use this word. I'm using 2 words. Perverse nonsense is happening. Millets should be consumed as noodles, or millets should be consumed as pasta. How many times do we eat pasta and noodles, each one of us sitting here? Millets should be eaten as millets. How do we really need to do is something which we need to look at and think. Millet should be, wherever things have worked fine, millets are consumed as grains. That is important. Next. Just now we felicitated a lady who has really done work on this. Here we have, in some of our projects, we have funded how do we create nutri gardens. How do we make people understand eating what you call the greens from the wild? There is a doctor in Mysore. His name is the Jack's therapy is what they call. They say unless until you eat all the grains, all the greens which are coming up, you would not be healthy. So suppose, for example, those of us who live in Bombay, we only know palak mostly and methi, which is grown around the tracks. Nothing else. How do we really make people grow this? Some startups have started, but somehow growing greens personally in the house has still not happened. This is a work in process. How do we really, what is the glide path? The glide path is a huge amount of campaign is required for this transformation to happen. One idea which I would like to give here, and which we tried in some of our projects, Mahatma Gandhi, when he started talking about, next slide, when he started talking about Gram Swaraj in 1942, he started Gram Swaraj to basically do reconstruction of the village. Time has come now, we are talking about decentralization. We should really go back and look what Mahatma Gandhi said. I think, just simply I'm giving one little example. There is one farmer, but there are several line departments which are trying to target that farmer. Every department has a particular scheme. And one farmer, 10 schemes or 100 schemes, and it doesn't really work. I think time has come. I personally believe we need to have a new dispensation where we need to have one department which coordinates everything and looks at that particular person. That's what Mahatma said. That's what Prime Minister is talking now. Vocal for local. So I think what we need to really look at this, and we need to do an experiment. And the one district, one product which the government has launched can work and create wonders when we really push the Gram Swaraj very intensely. Thank you so much. Thank you so much. And to the knowledge of the audience, the government of India has also launched a Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, जिसका टारगेट है कि 2024 तक हम जो डिसेंट्रलाइजेशन की आपने बात की कि हम ग्राम स्तर पर जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स वेरी क्रूशियल पार्ट. आपने 2-3 चीजों की ओर ध्यान दिलाया.
सूर्य कुमार जी, मुझे लग रहा है कि एक तो ये है कि अगर हम नीतिगत स्तर पर देखें, योजनाओं के स्तर पर देखें, तो एक जो गैप नजर आता है कि एक तरफ सरकार की योजना जैसे श्री अन्न इस बजट में उन्होंने अनाउंस किया, जिसको हम मोटा अनाज कहा करते थे। यहाँ थोड़ी सी भाषा की भी बात कि मोटा अनाज जो है वो जिस तरह से उसको, क्योंकि ब्रिटिश काल में इसको मोटा अनाज कह के एक तरह से डिग्रेड किया गया, मिस रिप्रेजेंट किया गया कि मोटा अनाज मीन्स दैट दिस इज नॉट फिट टू ईट। तो उसको अब हमने एक नए नामकरण के साथ श्री अन्न कहना शुरू किया, सो दैट वी अर्न दैट डिग्निटी बैक विद आवर इंडिजिनस फूड सिस्टम्स। और मैं अभी अहमदाबाद में थी, तो मुझे वहां पर एक फ्रूट था, उसको मैंने पहली बार देखा कि जंगल जलेबी, और इतना इंटरेस्टिंग फूड है। हमारे राजस्थान में एक मिलता है डांसरे, इस पीढ़ी तो ये तो पीढ़ी जानती ही नहीं है, हमने बचपन में खाए हैं बेर और डांसरे, बट दिस पीढ़ी डजंट नो। Anyways, so over to Professor Arun ji. Arun ji. Waiting. Okay. Okay. No, I think you can continue and then we can. Hello. Yeah. Thank you, Prabhuji, for giving me this opportunity. And I think, dear respected audience, let me just tell you what I do actually. And I am part of the Kavilya Education Foundation, and which is initiative of the Pyramid Foundation. So I'm not really an expert in the food or the discussions that is happening here. But I do connect my work through this discussion is in a way that we work in aspirational districts of India. And if you know, aspirational districts are districts where the human development index is the lowest. So there is absolute poverty and there are people struggling to even survive. The infrastructure is still a lot more to be desired. And therefore we work in 115 aspirational districts across India, across the 25 states, 27 states, and especially in Palghar under the Atmanirbhar Palghar project. With the blessing of Prabhuji, we do a very special project for the 102 ashram shala schools, which impact 65,000 students. So my work is definitely education and health. And when education and health is the core focus area, there is definitely food becomes a very integral part of this entire journey. So we need to see that without the children that comes to the school, food is very essential and food is very important for them to be healthy. And only a healthy child can do a healthy education. And that is a connect that I can see. And while I would like to bring forward the challenges that I face in the ground, when I want to, from the prism of hunger-free village, if I really have to look at, the whole thing starts is that we have beautiful schemes and wonderful support systems that have been created across the ecosystem. But do they percolate down to the last mile where the people or the child or the mother that it requires the most? So the challenge is there where we find that it does not really go down to the line, and there is some way, somehow it is blocked, or the people who really deserve it is missing out. So that is the challenge that I face. And I've really, with my little research in this, I find there are so many departments, so many agencies, and so many civil societies that are working to make a village hunger free. But therefore, I conclude by saying that collaboration and convergence becomes very important to be a very important integral part of a hunger-free district. So there are systems which are already there. We do not need to rewind or reinvent those processes. I think there is a agri-banking system, and there is for policies and processes. The panchayat plays a very important role, and he has multiple areas to be taken care of. And I mean, if he's responsible to do, it is not humanly possible. So how do we collaborate this, as you rightly said, that, how do we bring in those agencies together and then help that particular farmer? So here, instead of that farmer, how do we really
help that last mile children or the mother, so that, you know, the entire process brings, reaches to the right people who really needs the food. The person who is generating the food is supported, and even whatever he needs to, you know, to grow that food, the water shred, they're all separate departments. There's a water department, there's an ICDS department where the children and mother, lactating mother is taken care of. There is a health department who takes care of pregnancy and others. इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमिटी भी बनी हुई है. वो भी बनी हुई है, लेकिन वो भी आइसोलेशन में काम कर रहे हैं. So that is the coordination committee भी है, लेकिन वो भी आइसोलेशन में बैठे हैं. So this is the, I would like to share those practical you know, the real practical issues that I can face, I do face on a daily basis when I go to the ICDS program, which now under the National Education Program 2020, the ICDS or the Anganwadi becomes an integral part of the primary school system, the foundation level education. So Hamara involvement has also been gone there. And if I go to see to check on the nutrition value or the food that the child is getting, and the data that I see, that there is so many wasted children, there are so many underweight children, there is mother who is anemic. Still at this age, we are struggling with these small things which can be taken care of. I think I'll stop here, and we will be part of the conversations. And my contribution would be how we can mitigate the practical issues to make a village hunger free. Thank you. Yeah. And there are also two issues that which I draw it from you only. मुझे लगता है कि क्योंकि गांव में बहुत घूमना फिरना रहता है जब भी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी योजनाओं के तहत, जैसे माँ बाड़ी योजना है, पोषण वाटिका है, आयुष मंत्रालय के मार्फत बहुत सारे काम हो रहे हैं, मेडिसिनल पार्क्स नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा तो मेडिसिनल पार्क्स डेवलप हो रहे हैं. तो एफर्ट्स तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन जो हम लोग रियलाइज करते हैं कि एक इंटीग्रेटेड पिक्चर और एक जो गैप्स हैं वो शायद फिल करने की एक तो जरूरत है. दूसरी बात मुझे लगता है कि भारत के संदर्भ में I'll bring in the another panelist also, just throwing this question to you also, कि एक तरफ है कुपोषण की दिक्कत, एक तरफ है भूख की दिक्कत. एक मैंने किताब पढ़ी और डॉक्टर से काफी इंटरेक्शन भी मेरा रहा. डॉक्टर कमल महावर लंदन में रहते हैं, बहुत भारतीय मूल के डॉक्टर हैं. उन्होंने किताब लिखी फाइट विद फैट, और उन्होंने कहा कि ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द very serious problem that we are perhaps ignoring. तो एक तरफ कम पोषण की समस्या है और एक तरफ ओबेसिटी की समस्या है. तो ये जो दिक्कतें हैं हमारे पार्ट पर, भारत के पार्ट पर, क्या उसे पूरी समग्रता के साथ में देखा जाना चाहिए कि एक तरफ खेती को हम बढ़ावा कैसे दें. आपने सूर्य कुमार जी ने कहा कि प्रोडक्टिविटी का एक सवाल है कि जब हम मिलेट्स पे या देसी अन्न पे जब हम जाते हैं तो उसको हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि गांव में तो हम देखते हैं कि नई पीढ़ी खेती की तरफ लौटना नहीं चाहती है. और बहुत सारे जो इनोवेशंस है या वेंचर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है. और एक छोटी सी बात कह के अपनी आप तक पहुंचती हूँ. मुझे याद है कि कुछ मेलों में जब भी हम जाते हैं तो बहुत सारे इनोवेशंस देख के बहुत खुशी होती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं बिस्किट्स बना रही हैं, बाजरे के बिस्किट्स बना रही हैं, मिलेट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही हैं. तो मुझे याद है कि एक मेले में गई तो मैंने कहा कि बड़ी मायूस सी वो लहंगा ओढ़नी पहने बैठी थी. तो मैंने कहा क्यों ऐसे बैठी, कि सुबह से हो गई कि बाजरे के बिस्किट हम बनाते हैं, मशीन भी हमारे पास में, लेकिन कोई लेता तो है नहीं इन्हें, तो हम बेचें कैसे इसे. तो शी वाज सिटिंग ऑल डे एंड मैंने सिर्फ उनकी मायूसी को देखते हुए मुझे लगा कि अरे हमारी तो जिम्मेदारी बनती है. तो आई थिंक व्हाट वी आर लैकिंग इज कि इनोवेशंस हैं हमारे पास में, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है हमारे, नो हाउ है हमारे पास में, समझ है हमारे पास में, इतिहास है, धरोहर है, सब कुछ तो है हमारे पास में. तो फिर हम उसको सुदृढ़ क्यों नहीं कर पा रहे. ओवर टू यू. टू मेनी क्वेश्चंस आई नो. हेलो जी. Thank you. Am I audible? Yeah, perfect. Yeah. Okay. पहले तो प्रणाम सबको. Thank you for inviting me here, and it's a pleasure to be in this particular conference. I have a couple of points which I would like to submit for your consideration. The first point which I want to submit is that we are talking about a hunger-free district. But to me, the problem of hunger is intricately related with nutrition.
So the questions which you asked me just now are kind of completely interlinked, and I'll come to it about what we mean. So if you look at the history of India after independence, the government always comes out and says we have solved the problem of hunger, and yet we are lagging behind in the hunger index. We have got marks which are on alarming in the global hunger index. The reason for this is not the scarcity of cereals, but it is about the distributional issues related to the distribution of food grains within society. So, अगर आप broadly value chain of agriculture देखोगे, तो you can divide it between production, storage, distribution, and use. So there is an issue in production because of climate vagaries. So we are not getting the productivities that we have expected to get. So there is a reduction in production. There are several issues in storage of food grains and cereals which have been unaddressed by successive governments for all these years. Issues like theft, issues like pilferage, eating by rats and pigs, all of these kind of issues. And the third and final one is about the distribution. So the distribution itself has been skewed since independence, and we have made very little efforts to overcome the skew in society. So this is about hunger. Regarding nutrition, if you look at the issues in India, we can broadly break it down into two aspects. One is an extremely poor understanding of nutrition and nutritional divide within households. Dr. Gurdas, I'll request you to keep it short because we have very And the second is our lack of understanding of nutrition in the production system. So, like the earlier speaker said, right, millets are a source of nutrition. The hidden hunger which our body has not been addressed in our policy. So, hunger for vitamins, hunger for minerals, hunger for salts, these are the hungers which have been unaddressed. We are satiating our hunger for food by calories, by stuff which we are making in the industry. If you look at the food pyramid, in the food pyramid, the last thing which you should eat are the fats and the oils. But today we are consuming those in excess quantities because of industrially packaged food, which are fictitiously cheap priced. Right? A packet of chips costs 5 rupees. Now that is completely fictitiously low priced. We are eating sodium, we are eating sugar, we are eating palm oil within that, and we are satisfying our hunger. So on one hand, nutrition certainly, hunger certainly is an issue, which is a solvable problem, but nutrition is the key issue which requires a behavioral change in our dietary habits. So coming down to 2 points which I wanted to make is how do you address this issue? So at the policy level, we have to look at policies which are about packaged beverages, about artificially sweetened food, about food which have been added with fats. All of these, we need to drive the policies of millets down at the grassroots level. Second is changes within the public distribution system, which was also addressed by a colleague from NABARD, and so which have been not addressed in the operational part of it. At the policy level, yes, there has been significant attention given to it, but not at the operational level. And second is at the administrative level, the district level, encouraging millets in school. Not just millets. How about tubers? Tubers are a huge source of nutrition. Could we conclude? Yeah. Can we conclude? Yeah. And finally, the policies, and finally at the family level, where we need to educate about nutrition and well-being. This is not taught at the school level at all. We have so many subjects. We have technology, we have artificial intelligence, we have machine learning, but we don't have nutrition. Yeah, Absolutely. So I submit these points for the consideration. Thank you, and sorry for intervening in between. Thank you so much. So over to the audience, and on conclusion, I also wish to say that प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों की, क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, और इसके जो लोकल सॉल्यूशंस हैं हमारे पास में, आयरन का सॉल्यूशन हम जब बोलते हैं कि गुड़ सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन हमें टैबलेट्स की तरफ लेके जाया जा सकता है. तो बहुत सारी बातें दुनिया में ये भी हो रही है कि फूड पॉलिटिक्स जो है उसको भी शायद समझा जाए कि क्या एक नैरेटिव इस तरह का बिल्ड किया जाता है कि जो कुछ एक सेगमेंट को के इंटरेस्ट को, के हितों को पोषित करता है, और क्या उसे थोड़ा सा रिवर्स करके भारत की ओर मोड़ने की जरूरत है क्या.
तो कुछ सवाल अगर हम 1 या 2 मिनट में हम ले पाए तो वी वुड बी हैप्पी, प्लीज या अभी पानी की बहुत सारी बात छूट गई, समय इतना कम था, मुझे लगता है पानी पे एक पूरी बात होनी चाहिए थी और पानी का मुद्दा पूरा उसमें छूट गया. Anyways, since we are discussing about hunger, when I was with Maruti, I had a Christian friend. They were the very old Christians from Kerala, and there was a culture which he shared with me. Before going in night, they used to go out and say whether anyone is hungry. yes. And if we said that culture, even it was very much in the Sanatan Dharma also. Yes. And even our scriptures say that now in Kali Yuga, as you will progress, the food will start getting sold. Like if we see first hotel in the Mumbai is near CST, there was no hotel concept. And in southern, still we see there is a prashadam in every religious people. So I think hunger was never the issue unless there was a famine of which we live in around 200 years of British rule. Because so whether this hunger today, there is a lot of transportation, there is no famine across India. Still we are facing there a lot of schemes. Anganwadi is there, midday meal is there. But still फिर भी बाजार हावी है. फिर भी हंगर, फिर भी बाजार हावी है. और उसमें उसी आप ही की बात से एक छोटी सी बात कि हमारे यहाँ जब कहते हैं कि हम दोहन कर रहे हैं चीजों का, तो हमारी परंपरा में क्या है, दोहन शब्द जो है उसको फिर नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया. दोहन का मायने ये था कि जब दूध दुहा जाता था तो उसके 4 थन में से 2 हमारे लिए, 2 उसके बछड़े के लिए. Yes. दोहन इज नॉट, तो हम शोषण किया, हमने पूरी प्रकृति का, हमने अपने रिसोर्सेस का शोषण किया, उसका नतीजा है. और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिर से लौटना होगा हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति, हमारे नैरेटिव्स की ओर. और ये जो सारी परंपराएं हैं, फूड बास्केट है, जितनी विविधता है, हमारे यहाँ इंद्रधनुष नाम से एक पूरी योजना है जिसमें सतरंगी खाना बच्चों को खिलाया जाए कि अलग अलग रंग का खाना खाएंगे तो वो जो उनकी न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसीज हैं, those will be fulfilled. So we have a beautiful culture. Anyone else? Yeah. Because they are. So my question was same thing. Are we missing something basic? Why we are going today? Everything is there. Still we are facing the challenge of hunger. It was a comment rather than a question. Yeah. Please. Yeah. Thank you, respected all dignitaries, giving us opportunity to share view directly to you people. I'm Dr. Meenakshi Desai. Now, according to me, if you say hunger, I always think about all nutritional deficiency. And what I want to suggest, okay, fine, you are telling all this young generation, they are more getting attracted to all advertisement marketing. So if you see McDonald's or anything new, if you see, they have a more weightage. So why not we, educational system or a marketing or a advertisement to educate our younger generation and giving more concentration of a nutrition basis. This is my suggestion to you. And so change in the policy or, like advertisement, educational, you can please go ahead and to do the more marketing. Or you are underlining the aspect of awareness and sensitivity. Absolutely. Sensitization. Sensitization. That is the key, we have to do it. And I've seen this Poshanam Abhiyan ad, so beautiful ad. And there was one very interesting ad also, wherein I do not remember the tagline, but it was something ki, लोहा खाएंगी तो सोना बनेंगी बच्चियों के लिए था ना, the deficiency of iron, once they because eat nowadays we see the more young generation are visiting doctors, having this deficiency and you see problem. Food bloggers also, Absolutely. food bloggers, how they are Absolutely. creating a whole movement, and now online, social virtual. media, blog, It's very everything is powerful. available for this. We can utilize that. Why not? People understand what to eat. That the whole question comes: who is the one who is supposed to drive the campaign? A company will never do that. Yes, absolutely. They always think business. They always think of business. That is that way. So we, absolutely, for any activity. That activity in a village or anything. Absolutely, we can do it. Awareness campaign. Yeah. Why should having a balanced diet? Yes. Absolutely. Those questions have many questions behind. No. I know it is very easy to say, but I know all steps are required for that. Yeah. Thank you so much. One more. Can we take one more question? Yeah. One or two more. How to eat? Yes. Ji. Sir,
there is a small civil society organization in a place called Medak in Andhra Pradesh, in Telangana now. What they do is, Medak doesn't get much rainfall, 300, 400 millimeters. And what they did was they collected 70, 80 types of endemic all land races, and they go and tell the villagers, you can eat this. But villagers have forgotten how to eat foxtail millet. There are 20 carts go every year in December, January to tell, hey, how to make ragi food, how to make korra, what to call upma. They really do that. Means it is shame on us that we only know how to eat rice and wheat. So, means one little NGO is doing for that particular place. But what they do is only for Medak. So how do we really get this campaign? Who has to do? It's $1 million question. So rice and wheat will always get us into a serious problem. Yes, how to eat. सुरेश जी, इसी आप ही की बात पर हमारी सर, हाँ, उसी का सॉल्यूशन बोल रही हूँ सर, उसी का सॉल्यूशन में बिल्कुल। इसी में एक छोटी सी बात और, आपने जो कहा कि कैसे वो जो माहौल है, तो एक छोटी सी कहानी, हमारी लोक कथा बड़ी फेमस है वो, कि रेगिस्तान में जा रहे थे और पानी नहीं था, और तो वहां पर जो दो औरतों ने देखा कि पानी नहीं है लेकिन 2 हिरन है वहां पर, एक हिरन है और एक हिरनी है, तो जाके देखा तो दोनों मृत थे, और उसमें देखा कि पानी इतना तो था कि एक जना पी सकता था। और फिर वहां से वो कथा शुरू होती है कि जल थोड़ो और नेह घड़ो, पानी तो कम था लेकिन प्यार बहुत था, लगो प्रीतरो बाण, तू के पीवता दोनों तजिया प्राण, कि तू पी, हम बांट कर साझेदारी वाले समाज हैं हम। तो ये हमारी परंपरा, जो आपने कहा कि कैसे प्लीज। So I'll extend from Ms. Desai's talk further, क्योंकि I belong to education industry. I'm Dr. Kavita Agarwal. हम यूजुअली देखते हैं बच्चे अपने टिफिन के अंदर या तो मैगीज लाएंगे, पास्ता लाएंगे, नूडल्स लाएंगे, और उनको जब पूछा जाए कि आप ये क्यों लेके आ रहे हैं, पेरेंट्स क्यों भेज रहे हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस, टोटली वी आर हेल्पलेस, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। तो सर, यू आर ऑल्सो फ्रॉम एजुकेशन इंडस्ट्री, और आप गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंचाएंगे तो अच्छा रहेगा कि G20 के माध्यम से और C20 के माध्यम से, जैसे हमने NEP का एक करिकुलम बनाया है और एक कंपल्शन बनाया है, उसमें एक फूड एंड न्यूट्रिशन बच्चे को क्या डेली बेसिस पे खिलाना है उसका भी आप एक कंपल्शन बनाए। तो ये जो एक हमारी जो समस्या है कि माएँ बोलती है कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, अगर हम बोलेंगे कि इंग्लिश नहीं पढ़ाना है तो सुनेगा नहीं, तो वो तो करना ही पड़ेगा। वैसे फूड आप जैसे भी कंपल्सरी करेंगे तो वो खाना ही पड़ेगा। तो एक अगर वो एक पॉलिसी बन जाती है तो इट विल बी बेटर। So very well taken. I think this is a great suggestion. मैम थोड़ा क्योंकि जैसे मैडम ने अभी बताया कि आप लोग उसी फील्ड से हो, तो इस्कॉन के तरफ से हम लोग अन्नामृत के तरफ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, भारत में, महाराष्ट्र में ये मिड डे मील का प्रोग्राम करते हैं। हाँ। तो गवर्नमेंट के तरफ से वो सिर्फ खिचड़ी, राइस एंड पुलाव यही देने के लिए राइस मिलता है, और राइस के बदले में कुछ दिया तो ऑब्जेक्शन आ जाता है, मतलब हमारे ऊपर कुछ एक्शन हो जाएगा। तो सपोज हमें ये लोकल फूड प्रमोट करना है तो वहां भी एक चेंज लाना पड़ेगा। दूसरा, आप गूगल पे इंफॉर्मेशन के ऊपर चले जाओ तो वहां पता चलता है कि इंडिया में सबसे जो GHI है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वो सबसे, इंडिया इज बोले कि सबसे ज्यादा हंगरी कंट्री है, कि 16.3% वगैरह। तो उसपे देखा गया तो वो कुछ अलग इंफॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ अर्जुन मुंडा जी आए थे तब गौरांग प्रभु और मैं उनके साथ में था, तो बोले कि हमारा 12% ट्राइबल्स हमारे देश में रहते हैं, हम लोग बहुत खुशी से जीवन बिता रहे हैं। समस्या ये है कि आप लोग हमारे सामने ब्रेड या मैगी खाते हो तो हमको समस्या आती है। और हम बोलते हैं कि इंडिया का सबसे जो हंगर वाला स्टेट है वो झारखंड है, लेकिन झारखंड में सबसे ज्यादा लोग हेल्दी है। तो ये जो गूगल में कुछ चेक करो तो अलग डेटा आता है, और इसके बारे में अंडर एस्टिमेट किया जाता है पूरे सिस्टम को, कल्चर को, उसमें एक बदलाव लाने की जरूरत है। बहुत अच्छा। एक स्कूल में हमें जो पता चला कि अटेंडेंस बहुत लो हो रहा है, और उसका जब हमने
वी वेंट टू चेक कि अटेंडेंस क्यों लो हो रहे हैं, और वहां पे हम डेटा में देखा कि फ्राइडे को स्पाइक होता था 100% अटेंडेंस, देन अगेन डाउन, फिर सैटरडे, फिर नेक्स्ट फ्राइडे अप। ये क्या हो रहा है? हेडमास्टर से पता, हेडमास्टर बोल रहा सर हमें भी पता नहीं। बोले कैसे पता ना? एंड फॉर द हेडमास्टर इट वाज द फर्स्ट टाइम ही ऑब्जर्विंग दिस। देन वी रियलाइज्ड फ्राइडे में एग दिया जाता है, एग इन द मिड डे मील, एंड दैट वाज द अट्रैक्शन फॉर द। सो प्लीज, इंडिया एंड भारत में बहुत फर्क है। द वर्क दैट वी डू, यू प्लीज कम एंड सी। मैगी को सुना नहीं, ना खाया, ना टेस्ट किया कभी। उनका वो जो मिड डे मील होता है वो दिन का मील होता है, वही दिन का मील होता है, और उसका खाने के लिए स्कूल आते हैं। एंड वी आर हेल्पफुल दैट कि आज हमारा मिड डे मील एक पॉलिसी में बना हुआ है। आईसीडीएस में बच्चा इसलिए जाता कि उनको न्यूट्रिशियस फूड मिलते हैं वहां पे। लैक्टेटिंग मदर्स कम टू आईसीडीएस टू कलेक्ट मील्स. So that is one part that I'm looking at and I'm struggling at. So there's a lot of differences in our society, and aspirational district is one thing you should. I welcome everybody to come and see what the work that we are doing there and the state that we are in. So I think considering those numbers, though index जो hunger rating में हम लोग global hunger rating में, I think वहीं से सब data गया होगा, not from the other places. Otherwise, yes, we were also surprised. How can it be? And we are still debating on that. Thank you. Just in conclusion, yeah, just two things. I think ये जो आपने कहा कि अलग अलग स्थानीय जो खाना है वो कैसे उस पूरे सिस्टम में आए, उसके लिए जो भी सजेशंस होंगे, मुझे लगता है जो पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ से लिखित में भी सजेशंस आ जाएं कि हाउ वी कैन मेक इट पॉसिबल। क्योंकि एक तरीका यही है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हर गांव में, ग्राम पंचायत का जो डेवलपमेंट प्लान है, दैट इज द ओनली सोल्यूशन कि हम वहां पर उनकी प्रायोरिटी में लाएं, ग्राम पंचायतों की प्रायोरिटीज में लाएं, और वो जो कोऑर्डिनेशन है अलग अलग विभागों का, उनको कोऑर्डिनेशन है, और इंडिजिनस फूड सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ा पाएं। सो आई थिंक ऑन दैट रिमार्क, मुझे लगता है हमारे वेदों में भी कहा है कि अन्नमय कोश, प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय, और फिर आनंदमय। तो अन्न से आनंद की ओर जाएं हम लोग सब, इसके लिए हम सब लोग एफर्ट्स। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट, थैंक यू मॉडरेटर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस पैनल डिस्कशन के लिए। Requesting Mr. Siddharth Rath, MD and CEO, State Bank of Mauritius, to kindly join Prabhuji on the stage to felicitate our panelists. Ms. Mathur, requesting you to kindly stay back. A quick felicitation. Thank you so much for sharing your valuable insights. Thank you very much, panelists and moderator. And Shipra ji, कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो आप इतनी इतनी प्यारी प्यारी कहानियां और एनालॉजीज देते हो ना, उसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। दैट इज ब्रिलियंट, थैंक यू। Thank you so much, Dr. PVS Suryakumar, Mr. Arun Potar, and of course, a big thank you to Dr. Gurudas Nulkar, who's joined us virtually. Big thank you to sir. Once again, thank you, panelists. Let's have one round of applause for all of them. And thank you, Mr. Nath, for doing the honors. Thank you. Okay, so a very important announcement to all our panelists and moderators for the upcoming session. In the interest of time, specifically in the interest of time, it's a very humble request to all our upcoming panelists and moderators to kindly stick to the podcast style of setting. We are doing only panel discussions. Thank you so much, sir. Thank you. We'll have you on the stage once again soon. Thank you. So in the upcoming panel,
Sir, is address. You will also be joining? Okay. In the interest of time, requesting all the panelists to kindly stick to a Q&A format. We won't be doing any presentations or videos in any of the panel discussions. Also requesting all our panelists to kindly keep the answers short. Reason being, we have an ocean of knowledge that we want to gain from you. There are so many insightful discussions that are happening. Hence, we'll take more questions, more interactions, and shorter answers. And also, big thank you to our audience members for those wonderful questions. And on that note, Mr. Nath, requesting you to kindly say a few words. Thank you so much, Prabhuji. I think this morning sessions have been really informative. And the way that we look at it, so much needs to be done, not only at the policy level, but also at the ground level, in terms of realigning the entire way the program, in terms of our right from the habits, right from in terms of how to deliver the last mile connectivity. Multiple things needs to be done. A lot of food for thought, let me put it this way. And it has been a very wonderful audience who have been looking at and participating here. I think from here, the key takeaways which have been there is to see that how do we take it to Delhi in terms of incorporating it at policy level, program level, and also at the ground level in terms of implementation. Yes, we have all spoken, and it's not something that we don't know. हम सबको पता है क्या है, but उसको कैसे जो है आगे बढ़ा के, yes, it has to begin from the grassroot. इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको जो है ऊपर से we can't trust it. And again, प्रधानमंत्री जी भी वोकल फॉर लोकल की जो वेरियस प्रोग्राम्स हो रहा है, आई थिंक मोमेंटम एंड अ मूवमेंट हैज स्टार्टेड. हम लोगों को ही प्रयास करना है कि ये जो मूवमेंट जो है इसको एक सही दिशा दे, और ये मोमेंटम एक बार बन जाता है, आई थिंक फॉर अस एज वी लुक एट इट एज ए कंट्री, जो 140 करोड़ के ऊपर आबादी होके आज सबसे इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़े देश हो गया है, जो लेटेस्ट न्यूज जो आ रहे हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम भुखमरी एक चीज है, बट ऐसा नहीं है कि अनाज नहीं है, खाने के लिए नहीं है, बट सही खाद्य क्या है, सुरेश जी ने बोले कैसा खाना है. और ये जो है अगर हम बचपन से इसके ऊपर एक प्रोग्राम की तरफ करिकुलम में, और उसके बाद एक जो सही जो है, एंड गवर्नमेंट अकेला नहीं कर सकता है इसको जो है एक जो है मोमेंटम लाने के लिए, मूवमेंट के लिए सबको मिलके करना पड़ेगा. वेरियस NGOs who are there, various organizations which are there, all of us have to come along and do this. Thank you so much. Thank you very much. And as we go for lunch, I'm specially taking the mic to request that please come by 2:30 p.m. Lunch is quite heavy. The rooms are very comfortable. And Konkan is famous for inducing good sleep. But please do come. We have very exciting panels, and all the panelists will be very eager to see everybody on time, 2:30. And after lunch, if you have some time, before the panels begin, there are all these wonderful exhibitions which are there in this building itself. In the following halls, you can also have a look. ये सब exhibitions आप देख सकते हो. कई लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसमें भाग ले सकते हो. So again, see you at 2:30. Thank you so much. Good that you announced that, no PPT.